I think video
Good afternoon, all. Am I audible? Myself, Payal Joshi, DST Inspired Junior Research Fellow at Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot. I welcome you all on this platform named Vigyan Yatra, a travel for scientific Indian minds towards Vikshit Bharat. Vigyan Yatra is a series of conferences session for March 4th to 15th, 2024 and is jointly organized by Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, Vigyan Gurjari, which is a Gujarat Prant unit of Vigyan Bharati, GUJCOST, Department of Science and Technology, under Gujarat Vigyan Sammelan 2024. We are honored to have with us Shri Prasad Kuttan, Secretary, West Zone, Vigyan Bharati, VIBHA, and Professor C.K. Kumbharana, Professor and Head, Department of Computer Science and Member, Board of Management, Saurashtra University, Rajkot. We are extremely grateful to our patrons and co-patrons, Professor Nilambari Dave, Honorable Vice Chancellor of Saurashtra University, Rajkot, Professor Chaitanya Joshi, President, Vigyan Gurjari, Gujarat Prant, Dr. Narottam Sahu, Honorable Advisor and Member, Secretary at GUJCOST Gandhinagar, and Dr. R.G. Parmar, Registrar, Saurashtra University. I heartily welcome our today's invited speakers, Dr. Pankaj Poddar, Senior Principal Scientist, Physical and Materials Chemistry Division, CSIR National Physical Laboratory, Pune, and Dr. Pravina Sanjay Ugile, Professor, Department of Physics, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. I also welcome Professor Nikesh Shah, Professor and Head, Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, Dr. Piyush Solanki, Assistant Professor, Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, Dr. David Dhruv, Assistant Professor, Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, and all the participants. Moving ahead, I request my fellow researcher, Mr. Chintan Chasra, to welcome and introduce us to our today's guest. धन्यवाद. Am I audible? Yeah, thank you. Uh, Very good afternoon to all. Yeah, I'm very happy to attend this online program of Vigyan Gurjari called Vigyan Yatra. ये बहुत आनंद का बात है. पूरा गुजरात में विज्ञान भारती का गुजरात प्रांत यूनिट विज्ञान गुर्जरी में एक विज्ञान यात्रा का आयोजन कर रहे हैं. अभी आई थिंक 10 मोर देन 10 डेज हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किया है. गुजरात का अलग अलग जगह में ये प्रोग्राम चल रहा है विज्ञान यात्रा का. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स टू सेलिब्रेट साइंस. ये पूरा गुजरात में आयोजन कर रहे हैं. विज्ञान यात्रा का नाम है ये प्रोग्राम पूरा गुजरात में आयोजन कर रहे हैं.
तो आज पार्ट ऑफ दैट आज ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत आनंद का बात है। और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका मिला, तो मैं बहुत आभार हूँ। और आज का ये प्रोग्राम में विषय आप लोग चूज किया है, ये भी बहुत अच्छा है, द साइंटिफिक जर्नी ऑफ ह्यूमन बियॉन्ड 5 सेंसर्स। तो बहुत अच्छा विषय है और इसमें ज़्यादा सुनना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा बात करने का अभी टाइम भी नहीं है, बिकॉज सब लोग ये विषय को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। बट एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर्सन आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके एक मूल उद्देश्य, अभी इसमें बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हमारा भारतीय विज्ञान सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसमें आप लोग देखा होगा पूरा भारत से कितना साइंटिफिक कम्युनिटी यहाँ आया, गुजरात में आया और भारतीय विज्ञान सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें सबका विचार एक ही था, साइंस का काम करना है, साइंस के लिए काम करना है, भारत को आगे लेकर जाने के लिए साइंस का माध्यम यूज करना है। बट उसमें एक स्पेशलिटी ऐसे था, हमारा रीजनल लैंग्वेज में अपना मातृभाषा में साइंस को प्रमोट करना है और साइंस में उसका रिसर्च और उसका डिस्कशन मातृभाषा में करना है। बिकॉज हमारा देश में ऐसे अंग्रेजी माध्यम में ये सब करने वाला लोग बहुत कम, एक 10% लोग को भारत में ऐसे अंग्रेजी माध्यम से ये सब कर सकते हैं। बट एक बड़ा मोर देन 90% लोग अपना अपना मातृभाषा में उसका चिंता और उसका डिस्कशन ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे लोग को भी एक साथ लेकर साइंस का डिस्कशन, साइंस का रिसर्च एक साथ लेकर जाने के लिए विज्ञान भावी में प्रयास कर सकते हैं। और आज और एक महीने से ये कार्यक्रम गुजरात में कर रहा है, उसका भी एक मूल उद्देश्य ये है, विज्ञान का चर्चा अपना जगह अपना अपना संस्थान में अपना तरह से चलना है और उसके साथ विज्ञान को सेलिब्रेट भी करना है। और इस नाम विज्ञान यात्रा एक सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए हम लोग ऐसे नहीं दिया है, पूरा गुजरात में प्रोग्राम चल रहे इसलिए एक यात्रा एक नाम ऐसे ही विज्ञान यात्रा ऐसे दिया, ऐसे नहीं है। इस नाम का पीछे भी एक फिलोसफी है। आप लोग देखा होगा उस प्रोग्राम का टाइटल में एक द यात्रा टुवर्ड्स ए विकसित भारत, हमारा देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, एक विकसित देश बनाने के लिए ये यात्रा चल रही है। सिर्फ एक महीने का कार्यक्रम नहीं है, हमारा देश को आगे लेकर जाने के लिए। आजकल हम लोग बोलते हैं ये अमृतकाल है, हमारा देश का प्रधानमंत्री ने ऐसे आह्वान दिया है, अभी हम लोग अमृतकाल में चल रहे हैं, हमारा देश को आगे लेकर जाने के लिए अमृतकाल यूज करना है। तो ये अमृतकाल कैसे आ गया, हमारा देश का स्वतंत्रता पूरी करने के बाद अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया। तो ये 75 ईयर्स को पहले हमारा देश ऐसे एक स्थिति में था कुछ कॉलोनियल रूल के अंदर में, बट उस समय हमको मात्र एक लक्ष्य था, हमारा देश को स्वतंत्रता करने के लिए। स्वतंत्रता का मीनिंग भी ऐसे था, अपना आइडेंटिटी को वापस लेकर आने के लिए। किसी अन्य देश के अंदर में काम करने वाला व्यक्ति नहीं, उसके अंदर में जीने वाला व्यक्ति नहीं है। हमारा देश को स्वतंत्रता लेने के लिए एक लक्ष्य से हम लोग उस समय काम किया। हमको उस समय हम इस मीटिंग में अटेंड करने कोई एक व्यक्ति उस समय पैदा नहीं हुआ था, हमको ऐसे एक मौका नहीं मिला एक साथ एक लक्ष्य से हमारा देश के लिए काम करने के लिए, हमको एक समय नहीं मिला। बट ये अमृतकाल में ऐसे हमको एक मौका मिल रहा है एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम करने के लिए। तो ये विज्ञान यात्रा का भी उद्देश्य ऐसा है, ये अमृतकाल में 2047 में हमारा देश स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरी करने के टाइम में थ्रू दिस 25 ईयर्स, इस अमृतकाल से हम लोग एक साथ काम करेंगे विकसित भारत के लिए। ये एक ही मात्रा का एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है, हमारा देश को विकसित करने के लिए एक लक्ष्य लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आज हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और प्रोग्राम में साइंस का डिस्कस कर रहे हैं, साइंस के बारे में चिंतन कर रहे हैं। ये सबका एक ही उद्देश्य है, हमारा देश को आगे लेकर जाने के लिए। तो ये एक सिर्फ एक लक्ष्य ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग का दर्शन है, चिंता है, स्वप्न है। ऐसे हमारा देश में स्वतंत्रता का दिन महर्षि अरविंदो ने एक बड़ा भारत का दर्शन दिया, उस दर्शन को आगे लेकर जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद ने ऐसे एक भविष्यकार, हम लोग बोलते हैं भविष्यकार भी नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी के एक स्वप्न था, हमारा देश एक विश्व गुरु का पद में आना है। स्वामी जी ने क्लियरली उस समय बताया था, हमारा देश में स्वतंत्रता का लहर चल रहा था, उस समय स्वामी जी ने बताया 50 साल के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा।
उससे 100 साल के बाद हमारा देश फिर से विश्व गुरु का पद में आ जाएगा। तो ये उसका समय अभी आने वाला है। इस अमृतकाल से हम लोग आगे चलेगा और हमारा देश स्वतंत्रता 100 वर्ष पूरे करने के टाइम में एक विकसित देश, एक विकसित भारत का लक्ष्य पूरी करेंगे। तो ये इस प्रोग्राम, ये लक्ष्य के लिए एक छोटा पद है, एक कार्यक्रम। उसके लिए आज ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने सभी व्यक्ति को मैं मेरा बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और ये आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे अच्छा एक कार्यक्रम आयोजन करके धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your thought-provoking ideas. Now we have with us our another invited speaker, and I am very privileged to introduce our second invited guest with us. We have with us Professor Dr. C.K. Kumbarana sir with us. Sir is presently serving as Professor and Head of the Computer Science Department at Saurashtra University, RAJKOT. And Sir is also serving as the member Board of Management at Saurashtra University, Rajkot. Sir completed his bachelor's in physics from Saurashtra University itself, and then went to MCA course at Sardar Patel University, which is at Vallabh Vidyanagar, and again completed his PhD in computer science from Saurashtra University on the subject of speech pattern recognition for speech to text conversion. Sir is an expert in developing several computer related programs, and Sir has guided more than 8 PhD students and 3 are presently working under his guidance. Sir has evaluated more than 40 theses till now, and Sir is the member of various organization important committees of government of Gujarat and others, and Sir is also the member of several life member of several organizations like if I list there is a long list of achievement, but if I list the professional membership, then Sir is a member of Computer Society of India, the Indian Science Congress Association, and IETE. So these are some of the achievements, and now with this in brief introduction, I would like to invite Professor Kumbarana sir. Welcome sir. Thank you. Namaskar. Our patron, respected VC Madam, Nilambari Devi. Our another patrons, Chaitanya Joshi sir, Narottam Sahu sir,
Okay, sorry for the interruption. And our today's invited speaker, that is Pankaj Poddar sir and Pravina madam sir. We have the name, that is the Vigyan Yatra. That is the journey of the young Indian minds that will lead us to the Vikshit Bharat. See, if you mark the Yatra, in our Gujarati we say Yatra means we have the destination. And what is the destination of the Vikas Yatra? That is the Vikshit Bharat. We would like to reach to the Vikshit Bharat. And for this one, this Vikas Yatra is started. Under this Vikas Yatra, if you start the Yatra, this Yatra have the number of places. In our mechanism, we say that Yatra means we have to go to the one religion place, another religion place, third religion place, and ultimately we reach to our destination. And that is our Vikshit Bharat. If we'd like to reach to the Vikshit Bharat through the Vigyan Yatra, then science, Vigyan must be there. And for this one, a series of conferences are organized by the three organizations, that is Department of Physics, Saurashtra University, Vigyan Gurjari, Gujarat Prant Unit of Vigyan Bharati VIBHA, and Department of Science and Technology DST. Under this one, see the things again coming to the Vigyan Yatra. This Vigyan Yatra has 9 stops, and in this 9 stop we have the 9 days. In this 9 days, 2 days are completed. This one is the third days. Through these 9 days, we have to enrich our knowledge. We have to identify the new ideas from the eminent speakers. Our driver of this yatra, that is our Nikesh sir, has identified a very nice and excellent speaker and taken the subject also, that today I seen that the first topic, that is the scientific journey of human beyond the using the 5 sense, that is known to unknown, ignorance to knowledge, and darkness to the light. Our yatra, that is definitely will lead us, will take all of us from darkness to the light. I am very much happy that a very young people are over here. Registration, that is, I have identified that 600 plus registrations are done. Today, there are more than 100 young people, young scientists are joined over here. I'm not taking the much time, but I'm very much glad, I'm very much happy, and I pray to God that all the things, all the efforts that is taken by all this organization will definitely help, will enrich and gives the new knowledge, new ideas to all the participants. I wish you all the best. Jai Bharat, Jai Jai Bharat. Thank you, sir. Moving ahead towards the technical session, now I request Professor K.B. Modi, sir, Professor, Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, to chair the session of both the invited speakers. Okay. Good afternoon, everyone. First of all, let me welcome Dr. Pankaj Poddar. He is Senior Principal Scientist from very prestigious NCL, National Chemical Laboratory, Pune. Professor Poddar has received many awards, recognition, and starting from UGC JRF Fellowship. In 2008, he received Young Scientist Award from CSIR and MRSI Medal for the year 2040 and many more. He has published more than 135 research papers in internationally reputed journals. 3 patents are already granted.
in his credit and 4 are filed. He is author of 5 book chapters. His H index is 47 and he has delivered till now more than 150 invited talks, or you can say keynote lectures. Today he is going to talk on very unique or very special topic, that is scientific journey of humans beyond 5 senses. That is from known to unknown, from ignorance to knowledge, and from darkness to light. I hope everybody will enjoy this special sort of topic. Welcome, Professor Poddar. Thank you. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. मुझे बुलाने के लिए विज्ञान भारती की ओर से विज्ञान यात्रा, मेरी विज्ञान यात्रा को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार. और श्रीपाद जी का जो आभार, जो लेक्चर जो था वो बहुत ही प्रेरणादायक था, जो वेस्ट जोन के अभी सेक्रेटरी हैं विज्ञान भारती के. और उसके बाद में भी जो प्रोफेसर कुंभरना का जो था, जो लेक्चर था वो भी काफी प्रेरणादायक था. और मैं प्रोफेसर निकेश शाह और सारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ अपना काम प्रस्तुत करने का अवसर मिला. तो मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको शेयर कर रहा हूँ. आपको बताना पड़ेगा कि वो फुल स्क्रीन हुई है या नहीं हुई है. एक मिनट, आपको ये भी अनम्यूट करके बताइए जरा, ये हो गया क्या? फुल स्क्रीन हो गया क्या? यस सर, विजिबल. यस सर. हाँ सर, हो गया. तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा. तो मुझे थोड़ा 5 मिनट पहले बता दीजिए जब भी, क्योंकि अभी थोड़ा समय हो चुका है. मैंने ये लेक्चर वैसे 1 घंटे से ऊपर के लिए तैयार किया है, तो जैसे भी, क्योंकि दूसरे स्पीकर भी हैं. तो ये मैंने अभी टॉक दिया था मुंबई में. हेलो, यस, फुल स्क्रीन इज नॉट देयर. ओके, लेट मी ट्राई अगेन. ये थोड़ा सा मैंने तो किया है यहाँ से, पर वो कभी कभी होता नहीं है. एक मिनट. ये पूरा डेस्कटॉप शेयर करने से हो जाता है एंटायर स्क्रीन. अच्छा. ये मुंबई में भी समस्या आ रही थी. एक मिनट. अब ठीक है? अब शेयर हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है. अच्छा, तो आप देखिए मेरे स्क्रीन पर 3 श्लोक हैं. एक ऋग्वेद का श्लोक है, और एक भागवत गीता का है, और एक श्रीमद् भागवतम का है, कैंटो 5 चैप्टर 25 वर्स 12. तो यहाँ से ही चालू करूंगा. जो अभी जो उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी साइंटिफिक यात्रा क्या है, और उसके बाद में मैं अपना काम भी दिखाऊंगा अपनी लैब का. तो बहुत ज्यादा इन श्लोक को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और उसके बाद में हम बाद में आएंगे इसके ऊपर. पहले हम यात्रा को चालू करते हैं. हमारी यात्रा जो है, हम कहाँ से चालू किए, क्यों हमने विज्ञान चालू किया. ये मेरा ग्रुप पास्ट, जो दीज आर ऑल माय ग्रुप मेंबर्स, पहले पास्ट प्रेजेंट के जो हैं. मेरे ग्रुप ने कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, और उनके साथ मैंने जो सीखा है वही मैं आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा. और हमारे CSIR में हम उद्योग के लिए भी काम करते हैं. तो इन इंडस्ट्रीज के लिए, इन उद्योगों के लिए, जो भारतीय उद्योग हैं, और उनके लिए हमने भी काम किया है. तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन पर आते हैं. जो हमारा जो मस्तिष्क का इवोल्यूशन हुआ, हम लोग एम्फीबियन से रेप्टाइल इवॉल्व हुए, उसके बाद में बर्ड्स, उसके बाद में मैमल्स, और ह्यूमंस, राइट. फिश से चालू हुए, और ह्यूमंस में भी ह्यूमंस तक आना भी एक बहुत बड़ी एक यात्रा थी. आपको कई लोगों को पता है, होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद में होमो सेपियंस, कुछ जेनेटिक ट्रांसफर्स भी हुए अलग अलग स्पीसीज से, और फिर हम यहाँ तक पहुंचे. और उसके बाद में क्या हुआ, फिर हमारा जो मस्तिष्क का विकास हुआ. अगर आप ये ग्राफ देखो यहाँ पे, तो ये सारा आप मिलियंस ऑफ ईयर्स में है एक स्केल, और ये देखिए आप मिलियंस ऑफ स्केल में. तो
तो हमारा जो, और ये वॉल्यूम है, ब्रेन का वॉल्यूम है हमारा, ये देखिए 1000 सीसी का वॉल्यूम ह्यूमरेटिस का, और हम यहाँ पर हैं। तो हमारा मस्तिष्क बेसिकली जो था वो बड़ा होता चला गया वॉल्यूम में। और इसके पीछे क्या कारण थे? ये एक भोजन एक बहुत बड़ा कारण था, और उसमें जो उसके बारे में आऊंगा, जो उसके बारे में बताऊंगा, कैलोरी रिक्वायरमेंट से हमारा तो हमारा ब्रेन का 3 पार्ट है, सबको हमें पता है। जो नया जो ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो इंटेलेक्ट, लर्निंग कैपेसिटी, मेमोरी और लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है, जो हमारी ह्यूमंस की कैपेबिलिटी है, वो नियोकॉर्टेक्स में है। उसके नीचे मेमोलियन ब्रेन है, वो सबके पास रहता है, मेमोलियंस के। उसके नीचे है इमोशंस, एंगर, फियर, जो सारे मैमल्स में, बाकी मैमल्स में भी है, जो गाय में भी होता है। आपने देखा होगा, गाय के इमोशंस को देखा होगा, वो मेमोलियन ब्रेन की वजह से है। ऐसा नहीं है कि नियो कॉन्टेक्स बिल्कुल ही नहीं होता है, पर हमारे यहाँ ज्यादा, हमारे मनुष्य में ज्यादा अधिक इवॉल्व है। उसके बाद में रेप्टाइल ब्रेन है, जो हमें सिर्फ सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और इंस्टिंक्ट के लिए उपयोग में आता है। तो ये हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? मस्तिष्क का विकास तो हो गया, हमने उसका उपयोग पहले कैसे किया? हमारे जो पूर्वज थे वो बेसिकली हमारे जो 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया जो 5 हैं, हमने ज्ञानेंद्रियों से इस ब्रह्मांड का हमने अनुभव करना प्राप्त किया। हमने देखना, सुनना, छूना और और बेसिकली जितने भी 5 सेंसेस हैं, तो वो सारा हमने ब्रह्मांड को देखना चालू किया। और फिर हम विस्मय से हमें विस्मय होने लगा, राइट। हमारे 2 मित्र हैं बहुत अच्छे, क्यूरियोसिटी और वंडरमेंट, राइट। हम लोगों को एक रोचकता लगी कि भाई ये क्या है हमारे आसपास, क्या है ये पहाड़, पौधे, ये कलर है, खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है सारी चीजें। फिर हमने, मनुष्यों ने विकास किया इंस्ट्रूमेंट्स का, फिर हम देख पाए एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। और अगर हम पीछे जाएं, रिकैप करें हमारी जो विज्ञान यात्रा है, उसमें हमने जो अभी जो पाया है, जो हमारे वेदों शास्त्रों में ऑलरेडी है, अब विज्ञान भी इसको देने, पहले विज्ञान को लगा कि यूनिवर्स का एक ही अंत था, एक ही ओरिजिन था, बिग बैंग, और उसके बाद में एक ही बार हुआ और एक ही बार अंत होगा, जैसे वन लाइफ जो कंसेप्ट है। पर अभी मालूम हुआ है, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, कि एक ही बार भी जन्म होता है हमारा, और बार बार जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमारा भारतीय शास्त्र जो कहते हैं ये पुनर्जन्म है मनुष्य का भी, राइट, सभी जीवों का। और अब और हमारे शास्त्रों में जो यूनिवर्स का, जो ब्रह्मांड का भी जो बताया गया है, वो भी एक जन्म नहीं बताया गया है, कई जन्म बताया। अब भागवत गीता का, यहाँ पर आप भागवत गीता का श्लोक देखिए, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना त्यान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप, कि मैं बार बार आया हूँ, बार बार मैंने ज्ञान दिया है, तुम भी बार बार आए हो, और तुमने वो ज्ञान खो दिया है, पर मुझे याद है। ये मेरा सबसे चैप्टर जो अध्याय 4 है, वो एक पहले श्लोक से ही एक बहुत ही अच्छा है कि मैंने ये ज्ञान बार बार दिया है। तो अब जो पार्टी जो फिजिसिस्ट हैं, वो भी अब साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी में बहुत ज्यादा बिलीव रखने लगे कि ये एक ही बार नहीं हुआ है, कि एक बार बिग बैंग हुआ, ये हुआ, और यूनिवर्स का भी एक कर्म होता है कि कैसे उसका एंड होगा और कैसे ये होगा। तो ये है। और हमें यूनिवर्स का इवोल्यूशन पता है, हमें उसका ओरिजिन अभी तक भी नहीं पता है, ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि ओरिजिन के सिग्नल्स हमारे पास नहीं है। जो सिग्नल जो प्रकाश की किरणें जो पहुंचती है हमारे क्योंकि प्रकाश का किरणें उसके बाद बिग बैंग के कई बहुत समय बाद जब की सिग्नल ही हमें प्राप्त है। ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि हमें ओरिजिन, लाइफ की ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, हमें इवोल्यूशन के बारे में पता है। तो हमें क्रिएशन और इवोल्यूशन में हमें अंतर करना सीखना पड़ेगा। इवोल्यूशन बहुत ही अच्छी ये है कि इवॉल्व कैसे हुआ। इवोल्यूशन तो कि हमारे पास कुछ प्रमाण हैं, तो ये आपको एक समझना पड़ेगा अभी हम कहां तक पहुंचे हैं और क्या क्या कुछ प्रश्न अभी तक हमारे पास है। पर प्रश्न ये उठता है कि हमने विज्ञान के बारे में रुचि हमारी क्यों हुई। हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो नदियों के किनारे हैं, चाहे वो यहाँ पर हैं सिंधु नदी के पास, या फिर गंगा और सरस्वती नदी की जो सभ्यताएं थी, जितनी भी नदियां हैं उनके, और यहाँ पर अगर आप जाइए, जॉर्डन रिवर है इजराइल में, या फिर नाइल सिविलाइजेशन है, या फिर अमेजन में जाइए साउथ अमेरिका में,
वो सारी जो नदियों के किनारे सभ्यता ही क्यों हुई और उसका साइंस से क्या इसका क्या ये था योगदान था, उसके बारे में हमें, तो हम कब अपने हम लोग कब गूढ़ प्रश्नों की तरफ हम कैसे कैसे झुका हुआ, हम लोग अपने रोजाना के रोजी रोटी के जो मसले थे और उससे जो मुद्दे थे उनसे हम सर्वाइवल के जो क्वेश्चन से उससे हट करके हम बड़े प्रश्न की तरफ आए। हमारे ऋषि मुनियों ने कब, हाँ, इस तरीके से, तो मैंने इसको कुछ 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 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले हम सब लोग एक हंटर गैदर्स का जीवन जीते थे और हमारे अभी भी देखिए हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं वो अभी भी वो जीवन जीते हैं। वो कभी कोई संग्रह नहीं करते, वो प्रकृति के साथ जीते हैं और वो घूमते रहते हैं इधर उधर। वो ना तो कोई एक जगह रुकते हैं, जो मिल गया खा लिया, और बस्ती नहीं बसाते, कोई व्यापार नहीं करते। वो बेसिकली जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं और बस दूसरे जगह चल देते हैं, और वो कभी बसते नहीं एक जगह, या फिर खेती भी नहीं करते हैं। मैं उनको मानूंगा जो खेती नहीं करते हैं, जो पशुपालन नहीं करते हैं, मैं उनको वनवासी मानता हूं। इस मेरे जो परिभाषा है उसके अनुसार। परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है। जो साइंटिफिक जो जर्नी है, जो साइंटिफिक जर्नी में एक उनमें से कुछ जो ब्रांच कट हो गई, उनमें से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक हाइब्रिड वे ऑफ लाइफ जिएंगे, और ऐसे चलना फिरना उन्होंने बंद किया और वो नदियों के किनारे बसना चालू किया। फिर उन्होंने डोमेस्टिकेशन चालू किया, पशुओं का सीखा, सीजनल फार्मिंग चालू की। तो उनके पास कुछ खाने का जो कैलोरीज थी वो जमा होना चालू हुई कि कुछ सीजन में अच्छा फसल हो गई और गाय भी है दूध देने के लिए। तो कुछ फूड सिक्योरिटी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी सबसे पहले। जब फूड सिक्योरिटी आ जाती है, पेट में अन्न होता है, भूख मिट जाती है, तभी हम प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं, जो उससे लार्जर देन लाइफ जो प्रश्न है, कि जीवन से ऊपर के जो प्रश्न है हम उनको देखना चालू करते हैं। उससे पहले जो हमारे वनवासी भाइयों बहनों को अभी वो प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो कि अगले दिन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो प्रश्न था। तो जब हमारे पास खाने की सप्लाई चालू हो गई, तो हमारे पास समय था 3-4 महीने। जब फसल नहीं हुई तो हम सोचते थे, तारों को देखते थे, गणनाएं करते थे। तो हमारे जो ज्योतिष विज्ञान, हमारा पंचांग और हमारी जो गणित शास्त्र जो है, वो बहुत पहले कॉपर एज में 8000 साल के पहले उसके प्रमाण मिलते हैं, 8-9 हजार। और स्थापत्य कला, नृत्य कला, गायन कला, जो ये सारी जो कलाएं हैं, ये सारी जब चालू हुई तभी हुई जब पेट में अन्न चालू हुआ। उसके बाद में हमने बहुत आप देखो वैदिक जो सिविलाइजेशन हमें मिलती है, उसमें बहुत बड़े बड़े कई बहुमंजिला इमारतें मिलती हैं, बहुत रथ मिलते हैं। तो कैसे मिले? और वो सारे कॉपर एज के थे, 8-9 हजार साल पुराने। तो इसका मतलब विज्ञान, पहले गणित का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में। पर हमारी जो ब्रांचेस थी, जो वनवासी थे, वो भी अभी वैसा ही जीवन जी रहे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है या सही है। अभी भी बहुत, अगर आप अफ्रीका में जाओगे, ये ऐसा नहीं है भारत में ही है, वनवासी सभी जगह पूरे विश्व में है। ठीक है, आप साउथ अमेरिका में चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका में, और चाहे आप अफ्रीका में चले जाओ, अभी भी है। ट्राइब्स हैं बहुत सारी। यहाँ पे भारत में तो बहुत कम है अभी जो प्योर वनवासी जो हैं, जो खेती भी नहीं करते हैं। तो खेती का जो आविष्कार था और पशुपालन था, उसने हमें विज्ञान की तरफ प्रेरित किया, मेरा ऐसा मानना है और बहुत लोगों का मानना है। तो उसके बाद में हमने कॉन्शियसनेस की तरफ, और उसमें से फिर कुछ और सोसाइटी में ब्रांचेस कट हुई, कि उसमें से कुछ लोगों को ये कहा गया, जो ऋषि मुनि थे, कि भाई आप जो समाज है आपका पालन करेगा, आपको खेती करने की आवश्यकता नहीं है, समाज आपको अन्न देगा, समाज आपको गाय देगा, आप बस अध्ययन कीजिए नदियों के किनारे। तो इसलिए समाज ने उनका पोषण किया, पालन किया। तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ थे, आयुर्वेद, कनाद संहिता, जिसमें हम ग्रेविटी का ऑलरेडी हम वर्णन पाते हैं, सूर्य सिद्धांत बहुत बड़ा एक ये है। स्कंद पुराण में तो बहुत कुछ मिलता है, ज्योग्राफी के बारे में है, साइंस के बारे में, योग वशिष्ठ, अभी मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, उसमें काल गणना के बारे में इतना आगे, योग वशिष्ठ में इतनी एडवांस फिजिक्स है। ये हायर कॉन्शियसनेस के प्रश्नों के ऊपर हम तभी आए जब यही विज्ञान की यात्रा थी। और अगर एक अभी जो पुस्तक आई है पढ़नी है, डॉक्टर भास्कर कांबले की एक पुस्तक पढ़ी है, इम्पेरिशेबल सीड्स। बहुत मिचेल दनीनो थे, अभी हमारे जो एक श्रीकृष्ण जी थे, उन्होंने भी एक नाम दिया श्री अरविंदो का। महर्षि अरविंदो के शिष्य हैं मिचेल दनीनो, जो ऑरोविला में रहते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, ये इंजीनियर हैं।
उन्होंने बहुत काम किया है, ये उसके बारे में उनका स्लाइड भी दिखाऊंगा। उसके बाद में फर्दर डिवीजन भी जो हमारा जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का जो कंसेप्ट आया उससे और रिफाइनमेंट हुआ, उससे हम लोग हाइपर फोकस कर पाए। वर्णाश्रम का फायदा ये था, हम अपने काम पर ध्यान दे पाए, उससे हम और रिफाइन कर पाए। स्थापत्य कला वाले स्थापत्य कला कर रहे थे, जितनी कलाएं थी वो विकसित हुई, जो हमें आज लुप्त हो रही है सारी हमारे, क्योंकि वो एक रिफाइनमेंट के लिए वो जनरेशन वो जरूरी था। पर ये सब चल रहा था, उसके बाद में कुछ धर्म या फिर कुछ मान्यताएं हुई, उन्होंने उसमें एक पुस्तक कोई बाकी विज्ञान से उनका नाता कट गया, तो वो एक डार्क एजेस ऑफ साइंस थी जहां पे वो ब्लास्फेमी का कंसेप्ट आया, मीनार से धकेल दिया, गर्दन काट दिया और कोई साइंस ने, और जो फ्लैट अर्थ के जो तो हमारे यहाँ भूगोल का कंसेप्ट ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे दिखाया है अपने स्लाइड में, पहली स्लाइड में, कि पृथ्वी गोल है और ये सारी चीजें कंसेप्ट थी। आप ऐत्रेय ब्राह्मण का देखिए, सन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। उसके बाद में कई 6000 साल बाद में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, उसके बाद उसके अलावा हम पीछे मुड़ गए, और ये बहुत करीब 2000 साल, करीब 1500 साल का जो अंधेरा काल था, उसमें किसी का हिम्मत नहीं होती थी विज्ञान के बारे में बात करना बंद हो गया बिल्कुल, और वो एक ही बुक को लेकर के और वो चालू हुआ। और जो प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति के उपासक थे सारे विश्व में, उनका पतन हुआ। और फिर वो, पर उसके बाद में फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, धर्म और विज्ञान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट 1500 साल पुराना ही है, उससे पहले नहीं है, आपको ये जानना पड़ेगा। 1500 साल पुराना ही उसका अध्याय है, 2000 साल पुराना, 2000 साल से पहले कोई उसका धर्म और विज्ञान में कोई भी ये नहीं था, धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ चल रहे थे, आप देखिए। फिर उसके बाद में फिर वैज्ञानिकों ने विद्रोह किया, धीरे धीरे चोरी छुपे काम करना चालू किया, कई वैज्ञानिकों की मृत्यु भी हुई वहां पर। कि उसके बाद में हम जो अभी वर्तमान में आए हैं, बहुत बड़ी जर्नी रही कि हमारी, कि धीरे धीरे डर डर के काम किया। तो फिर केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जो थे, केरल के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वहां से ये 500-600 साल पहले सारी विज्ञान जो और गणित का जो ज्ञान था वो यूरोप में गया चोरी छुपे, जो मिशनरीज के थ्रू। और फिर वहां पर जो कोपरनिकस, और अगर आपके वहां देखते हैं अचानक से कैसे उनको इतना ज्ञान हो गया, वो सारा केरल में जो ज्ञान था, केरल में ज्ञान का भंडार था। अब शंकराचार्य का से चालू करे हैं, तो वो वहीं से सारा माइग्रेट हुआ। वहां पे कोस्टल जो एरिया था, वहां से जो नाविक आते थे और जो व्यापारी आते थे, वो सारा ज्ञान लेकर के अरब में गए, चाहे वो गणित का जो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। पर अब हम फास्ट फॉरवर्ड, हम पिछले सेंचुरी में देखें और अब सेंचुरी में क्या अंतर है हमारी साइंस में। पहले जो सेंचुरी थी, हमारा जो विज्ञान था वो इट वाज ड्रिवन बाय वार्स। एक्चुअली विश्व युद्ध हुए तो उनसे हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरणा, उसके लिए काम करना पड़ा, जितनी भी इन्वेंशंस हुई। उसके बाद में इट वाज द एज ऑफ स्पेस वॉर। मैं थोड़ा अंग्रेजी भाषा में स्विच करूंगा कि so last century was the age of space war actually, right? And that led to a lot of then nuclear race was there, space race was there, and 2 world wars were there. So a lot of discoveries, lot of inventions happened in last centuries. And also then there was a food crisis, so our agriculture revolution happened. It was the age of genetics also. Then it was, then after that it was age of semiconductors. Then came so these are that all started. Then came industrial revolution when we started basically mass production of goods, commodity चालू हुआ। उसके बाद में WTO agreement हुआ। उसके बाद में it was all the money came in and then money was pumped into science. ये सारा विज्ञान यात्रा का ही था। उसके बाद में क्या हुआ, फिर इंटरनेट का युग आया। इंटरनेट के युग ने जो ज्ञान को सभी कोने में पहुंचाया। उसके बाद में जो भी IT रिवॉल्यूशन हुआ, सिलिकॉन का रिवॉल्यूशन ने, सारे इन्होंने काम किया। पर मैं अगर देखूंगा कि पिछले सेंचुरी में जो विज्ञान जो था वो एक अंधाधुंध दौड़ में दौड़ गए हम लोग। हमने अपना बहुत हमारे पर्यावरण का हमने बहुत नुकसान किया। अब जो सेंचुरी होगी, और उसमें जेंडर इनइक्वालिटी भी काफी थी, महिलाओं का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिलाओं का जो योगदान था
हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं का योगदान होना चाहिए, महिलाओं का योगदान होना चाहिए। महिलाओं का योगदान 100 साल पहले बहुत कम था और अभी तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अभी कभी भी कहीं पर भी आप जाइए, आधे से ज्यादा महिलाएं विज्ञान में और बहुत अच्छा कर रही है हमारी बेटियां जो। तो ये जो सेंचुरी है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। साइंस एक दौड़ नहीं होगी, साइंस एक हर ग्लोबल साउथ में हर हर कोने में जाने वाली है हर साइंस। और उसमें इनइक्वालिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले, द fruit of science earlier were confined to Western countries. Actually, they never reached to like countries like poor countries like Africa and other parts of world. So this century, the fruits of science will reach to every parts of world, and then we will be more environmentally conscious. We will save our resources. So this, I feel that in 21st century and forward, our science will be more calibrated, more wise, and we will know how to survive. Now I share one slide which was presented at NCA long ago by Mitchell Danino, who is a disciple of Maharshi Aurobindo, not direct disciple, but he spent time in the ashram there. So he says that India's love affair with infinitesimal. So basically he says he studied that what was the when we discuss about science, we believe in measuring something. We should be able to measure whether it is these 8 SI units we talk about, whether it is mass or it is time or distance and other. So then he did a lot of research, and then other people also did a lot of research, and I would like to highlight one specific contribution by a retired scientist of CSR, National Physical Laboratory, Delhi. He has published a brilliant book. Actually, I still have to read. I got it purchased in our NCL library. Unit of Measurement, Past, Present, Future, International System Unit by Dr. S.V. Gupta. And he basically list out that from Vedas, basically, that our ancestors were talking about microseconds. Actually, you can see that Parmanu was not the unit of material; it was the unit of time, actually. And Anu, I mean, it was interchanged. Probably it was also basically unit of material also. And then came I'm still reading Nimesha. Actually is very popular, which is almost 1/3 of a second. So obvious question arises that what our ancestors were doing with हमारे जो पूर्वज थे इतने छोटे समय के उसे कर क्या रहे थे basically, right? So सूर्य सिद्धांत में भी ये दिया गया है, माइक्रो सेकंड तक काल की गणना जाती थी, मैंने बताया। और ये 7000-8000 साल पहले ही हो गया था। उसके बाद में डार्क एजेस में ये सारा जो ज्ञान था ये लुप्त हो गया। So now I will share some popular critical look at some of the popular experimental techniques in condensed matter physics and some examples. Of course, this Vigyan Yatra program has invited galaxy of wonderful speakers in the past, and I saw last 2 days program were full with really but I will present 1 or 2 techniques depending upon the time. But I thought that these 2 slides will be much more useful to the students community sitting here, because they will get a summary of all the techniques in these 2 slides actually. So pay attention. I think these are 3 slides actually, and they are very rich, and I spent some time in organizing this. So in physics or in chemistry, even in biology, actually, this is in any discipline of exact science. Biology is still not exact science, but we want to, as a scientist, we want to look at the crystal structure. So we do X-ray diffraction, powder X-ray diffraction, or single crystal X-ray diffraction, or electron diffraction, or neutron diffraction, right? And then we can do HRTM also. We can look at lattice fringes. Then we also want to know the stoichiometric analysis. Here we look at inductive coupled plasma or X-ray fluorescence. There are many other techniques also, and then there are some microscopic techniques which I have listed separately, where you can go atom by atoms in some cases using aberration corrected electron microscopes. So for example, HADAF, high angle annular dark field, where you can look at difference between heavier elements and lighter elements. Of course, you can look at backscattering also, right? Backscattering, which is elastic scattering technique.
You can look at yields also, right? Electron energy loss spectroscopy, which also gives you an idea about not just about elemental mapping, also about the bonding and environmental effects. And you can do energy dispersive spectroscopy and wavelength dispersive spectroscopy, Auger spectroscopy, etc. Optical properties, you can, one of my favorite is ellipsometry, which gives you idea about interfacial roughnesses and whatnot. And then you can do static and dynamic photoluminescence. You can do UV visible absorption spectroscopy and Raman spectroscopy. I'm sure many of these techniques are already covered in this forum since last 2 days. Morphology, we can look at using optical microscopes, transmission electron microscopy, scanning probe microscopy, and also we can use static and dynamic light scattering, scanning probe microscopy. We also, as a scientist, would like to look at. Just remember what I showed this slide. Actually, the extension of 5 senses. Actually, the title slide, right? So if you notice that all these techniques are somewhere extension of our this 5 इंद्रियों का ही ये विस्तार है. ये 5 इंद्रियों का ही हम विस्तार कर रहे हैं. और and then we can look at functional group at nanoscale. So we can take the infrared spectroscopy to the nano level. So nano IR, we can do single molecule spectroscopy using tip enhanced Raman. We can do single molecule spectroscopy, etc. And then we, as a scientist, we want to do the thickness measurement. Then we can use atomic force microscopy, scanning tunneling microscopy, profilometer, high resolution laser dilutometer. It's a very powerful technique based on interferometer. Of course, ellipsometer is again my favorite, and we can do cross-sectional SEM. We can do thermal expansion measurements, also heat capacity, electrical conductivity, thermal conductivity. And these are all my favorites since last almost 25 years of my scientific, more than almost 30 years of my scientific career. These techniques have been on this page has been close to my heart. And last is basically the magnetization, vibrating sample magnetometer. So then to extend our 5 senses, 5 इंद्रियों का extension करने के लिए हम या तो electrons use करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं. अगले स्पीकर भी एक अच्छा टॉक देने वाले हैं उसके बारे में भी. और इलेक्ट्रॉन्स, and there are advantages and disadvantages, so I listed them in a table so that it will touch broad spectrum of listeners today. तो ये सबको ही प्रेरणादायक रहेगा, तो मैंने सोचा सभी टेक्निक को ही लिस्ट कर देते हैं एक जगह बजाय. तो इलेक्ट्रॉन का एडवांटेज है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद एटम्स. इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स फेयरली एडवांस, स्मॉलर सैंपलिंग साइज, नैनोस्केल एनालिसिस. But at disadvantage, you have vacuum requirement, sample damage, probabilities, spatial sample preparation, cost, time consuming. We can use X-ray photons and other photons also, visible IR and other terahertz these days, and then radio waves and other electromagnetic waves, right, in the entire spectrum. They are all useful to get the different kinds of science out, scientific investigation. They're easily available, almost no sample preparation, large sampling size. This is my third thing, is my own favorite. We did a lot of work in this area: force mapping, 3D topographical mapping, ambient quantitative integration with other techniques also. Now you see force mapping has been integrated with Raman also. Force mapping has been AFM I'm talking about. It has been merged with the scanning electron microscope also. Then we have this neutron-based techniques. The advantage is basically that atomic form factor is independent of atomic number. In case of we know that in case of electrons and X-rays, the atomic form factor is directly proportional to the atomic number. So there are some limitations. But here neutrons, there is no limitation because of this fact, and also the fact that neutrons are sensitive to the magnetic structure. We can study spin polarization. But the disadvantages are neutrons availability. You have to go to the nuclear reactor, and then weak interactions. Thermal transport is again my favorite. It's one of my PhD topic. I developed some techniques in my PhD. It gives you direct analysis, and you can study phonon contribution, electron contribution, and there are 2 contributions, as you know, in thermal transport done by electrons and phonons. But then there are problems also, that contact related artifacts, changes of properties over time, difficult to do the measurement due to thermal isolation. These are other problems.
Electrical transport is a wonderful technique, dear to physicists mostly. We can do precise band gap measurements. You can use STM also there, but then again there are bottlenecks also. Now, I would like to go back 100 years and some milestones in our hundreds of years of scientific journey. What happened that we will start actually our journey, scientific journey, Vigyan Yatra, from J.J. Thomson's discovery of electrons. After that, it has a compounding effect. After Newton's contributions, obviously Newton, they were not originally Newton's contribution. You know that Rishi Kanas had already given. It's all now well documented fact. But anyway, so then nothing really happened, and there were a lot of different schools of thoughts which believed in whether material is divisible or indivisible, and so then this continued, and then early last century was the birth of quantum mechanics, and then came the discovery of the atomic structure, and the Rutherford's experiments, and then came basically the experiments done by Ruska, who developed the electron microscopes in Germany. And then when electron microscopes were developed, then biologists started looking at different organelles of the cells. Then I will present some of this journey in these slides. I will skip this part because this may be slightly complex. It's hardcore physics. So basically this, but I would like to highlight this slide. This was first attempt in India in our lab in my PhD in 1996. This was India's first low temperature vibrating sample magnetometer based on the original design by S. Honer. So this has basically, if you look at this is a magnet pole pieces, and then this is a sample holder. These are actually these are basically vibrational coils. So just we took the two speakers, and took the magnet out, and then we drilled one hole, and this was basically a rod, plastic rod, and then sample. These are magnetic pole pieces, electromagnet, and then the sample would vibrate here. And this was our cryostat, which we just developed. So it was liquid nitrogen flow kind of cryostat, so it could control the so basically the boil off, or the nitrogen vapor will come out of from here, and then it will cool the sample here. And then it was quite accurate, as good as Oxford instrument at that time, and we calibrated that, and a lot of data went into my thesis and other student thesis, and some improvised versions came out after I left PhD from JNU in 2000. And then I used advanced commercial system to study the electron tunneling on these ferrite nanoparticles. Yeah, what you see on your screen are basically, you can see two-dimensional assembly of beautiful array of iron oxide nanoparticles. So the idea was to study the high density magnetic storage. So how these spin up, so whether you can store information and you can read and write, and this so basically this I will skip this. So then, so these are actually magnetism based technique, magnetic field based techniques. So these techniques work in different time scales, and these techniques were developed over last century. And second technique is basically second domain of scientific techniques is basically based on light, which is everybody's favorite, as I listed in my table, that these are actually non-contact measurements, and there are so many techniques which are based on light, whether you call FTIR, Raman, ellipsometer, laser light scattering, so many techniques, so which are either based on transmission or reflection or absorption or luminescence study, and these are based on either elastic scattering or inelastic scattering.
I would like you to, some of you, if you are interested, this beautiful book, Absorption and Scattering of Light by Small Particles by Craig Boheran and Hoopman, which basically tells you in detail how to basically look at these concept of scattering from matter at a microscopic level. So this is a beautiful book. Because lack of time, I will not be able to go because I want to just present one overview because of scientific journey. Then came actually another brilliant invention by Paul Druda. I think all physicists, they know Paul Druda's name. Ellipsometer was first developed by Paul Druda long ago, 1887, and then he derived also the equations. So in this technique, what happens that you take linearly polarized light and then you shine on thin films, and then you basically the S polarized and P polarized components, as you can see on the screen, they interact differently with the dipoles present in the samples, and they get absorbed differently. So the linearly polarized light get elliptically polarized light. As you can see, the output is linearly. Actually, this technique is just where I'm sitting is next to me. And so this technique basically allows you, when you measure the degree of ellipticity, which is presented by rho is equal to 10 psi e to the power iota delta, which is basically a ratio of this P and S component. Then what information this gives you is basically, you can look at this, it gives you information about N and K, which are real and imaginary part of the optical constant. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी, तो दोनों के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इससे थिकनेस भी आप मालूम कर सकते हैं, इससे इंडिविजुअल फिल्म की थिकनेस मालूम कर सकते हैं, इससे ना मल्टी लेयर आप ले सकते हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर लेकर के, जैसे आपकी पुस्तक है ना, पुस्तक की समझ लीजिए अलग अलग पेज की थिकनेस मालूम कर सकते हैं, ऊपर की रफनेस मालूम कर सकते हैं, इंटरफेशियल रफनेस भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का। उसमें देखिए जैसे ये एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है के, है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, और एक्स एक्सिस देखिए वेवलेंथ में है, और आप देखिए कितना ये एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, ये सारा डेटा इलिप्सोमेट्री का ही है। ये देखिए जैसे ही हम क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से अमोर्फस सिलिकॉन की तरफ आते हैं, जो ब्लू कलर का जो ये है, ये जो नीचे वाला है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का डेटा है, और उसमें देखिए 75 हम जो क्रिस्टलाइनिटी को कम करते जा रहे हैं यहाँ पे, और फिर लाल वाला कर्व है पूरा अमोर्फस सिलिकॉन का है, जो सोलर सेल में हम सब काम आता है सारा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हम लोग सीधा एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ। हमको पता है एन और के जो होता है वो वेवलेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है। और हम इससे क्या मालूम कर सकते हैं, तो ये देखिए सेमीकंडक्टर्स में हम गेट डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग सैंपल बहुत सारे हैं, ये मैं लिथोग्राफिकली जो फिल्म होती है फैब लैब्स में, अब हर फैब लैब में आपको एक बहुत सारे इलिप्सोमीटर मिलेंगे। तो आप अगर केमिस्ट हैं तो आप पॉलीमर थिन फिल्म्स के ऊपर बहुत अच्छा, पॉलीमर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है, सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है, प्रोटीन्स की लेयर हो, डीएनए की लेयर हो, और ये डिस्प्ले आप जो मुझे मेरा जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो ये कोई भी थिन फिल्म हो, जैसे डिस्प्लेस हैं आपके आंखों के सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये टीएफटी चाहे एलईडी फिल्म हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, उसकी थिकनेस, रफनेस, ये सब कुछ आपके जो भी ऑप्टिकल पैरामीटर्स हैं वो सब इससे मालूम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, बहुत हाई प्रिसीजन है, बहुत हाई प्रिसीजन है। मैंने यहाँ पे वर्कशॉप भी कराया था कई साल पहले, इसका बहुत पॉपुलर हुआ था, कोविड टाइम में ही कराया था, ये ऑनलाइन था। तो आप इसका देखिए थिकनेस सेंसिटिविटी फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम है, आपको देख के आश्चर्य होगा, शायद आपको ये टेक्निक के बारे में पता नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, बहुत फास्ट होता है मेजरमेंट, आप बड़े एरिया पे इसको देख सकते हैं, रियल टाइम आप मॉनिटर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि उसको आपको थोड़ा इसमें फिजिक्स का ज्ञान ज्यादा चाहिए, इसमें भौतिक शास्त्र का ज्ञान ज्यादा चाहिए, इसमें मॉडलिंग करनी पड़ती है, तो आपको बहुत मैथमेटिकल नॉलेज भी, बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए। ये डायरेक्ट टेक्निक नहीं है कि सैंपल डाला और डेटा आ गया और बस ऐसा नहीं होता है। तो जैसे इसमें जैसे आपने मॉडल बनाना पड़ता है, ये देखिए ये टीएम का डेटा है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलिप्सोमीटर का डेटा है, ये इस सैंपल का, ये देखिए ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, फिर बीच में ये अमोर्फस सिलिकॉन है,
ये क्रॉस सेक्शनल है, ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, फिर ये कुछ मिक्सचर है, फिर लास्ट की जो परत, जो अंतिम जो परत है वो सिलिकॉन ऑक्साइड की है। तो हमें इसके मान लो इसका हमें हर परत का हमें अगर अध्ययन करना है, इसके ऑप्टिकल कांस्टेंट एन के हमें मालूम करने हैं, इसका हमें कंपोजिशन मालूम करना है, इसका हमें थिकनेस मालूम करना है, तो कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे? बहुत इतना आसान नहीं है। तो इलिप्सोमेट्री से ये सब बहुत आसान हो जाता है। इलिप्सोमेट्री से देखिए ये आप नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो आप इसमें टीएम में इतना आसान नहीं है। इसको जिसको जो टीएम का एक्सपर्ट है वो उसको मालूम होगा। इसको आपको इसको थिंक करना पड़ेगा, सैंपल को इतना आसान नहीं है इसके लिए सैंपल टीएम सैंपल बनाना, पर यहाँ पर इसको आसान हो गया। देखिए यहाँ पे आप सिलिकॉन ऑक्साइड का थिकनेस मालूम कर सकते हैं, जो बहुत टीएम से जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसके बहुत आसपास ही है। ये देखिए क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, और इसका रेशियो भी मालूम कर सकते हैं, इनफैक्ट आप पोरोसिटी भी मालूम कर सकते हैं इसमें। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ ज्ञान है। और ये देखिए ये इसकी यात्रा पर जाए तो 1888 में ये टूल डेवलप हुआ था, और अभी तक भी ये इसकी यात्रा चल रही है। इसके बहुत डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी आगे आ रहे हैं। एक और ऑप्टिकल टेक्निक जो हमने हमारी लैब में बहुत ज्यादा काम हुआ है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ शायद इस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत कुछ लोगों ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि और अभी भी साइंस डे गया है तो आपने बहुत कुछ मालूम हुआ होगा। तो स्मेकेल ने इसकी थ्योरी दी थी, और प्रोफेसर रामन ने क्या किया, जो लॉर्ड रेले थे उस जमाने के बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, उनको चैलेंज किया हमारे प्रोफेसर रामन ने। और तो उन्होंने जो आपको पता है रेले का लाइट स्कैटरिंग का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रसिद्ध है, 1/λ⁴। उन्होंने बताया कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों होता है, विबग्योर। तो उन्होंने बताया कि जो जितना भी स्कैटरिंग ज्यादा होता है तो वो रंग आकाश का दिखता है। तो हमारे उसके ऊपर हमारे आंखों का भी जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करता है, इसलिए हम उसको वायलेट नहीं देखते हैं, हम लोग ब्लू देखते हैं, राइट। विबग्योर जैसे कहते हैं, विब वायलेट, इंडिगो, ब्लू। हमें ब्लू दिखता है क्योंकि जो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें हम ब्लू कलर हम ज्यादा देख पाते हैं। तो मैं इस बारे में एक फेसबुक पे एक पोस्ट थी, एक वैज्ञानिक हैं आईआईटी मंडी के, मेरे मित्र हैं, मेरे जूनियर हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रश्न पूछा था कि हम इतना पिछड़ क्यों गए। हमने रामन जो चाहे मेघनाथ साहा हो, रामन हो, और कितने सारे जेसी बोस हो, चाहे एसएन बोस हो, कितने वैज्ञानिक हमारे स्वतंत्रता से पहले हुए, अब उसके बाद क्यों नहीं हुए। रामन का इंस्ट्रूमेंट का कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं हुआ 60 साल में। तो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, और लगे ना लगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। पर प्रोफेसर रामन ने भारत की जो विज्ञान की जो ये जो हालत हुई है पिछले इतने दशकों में, उसका बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी थी। वो इतने नाराज थे जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का, सीएसआईआर का, डीआरडीओ का इतना निर्माण किया और उसको पूरा ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में घुसा दिया, उसको पूरा ब्यूरोक्रेसी और उसको लॉबी, उसको स्वतंत्रता नहीं दी वैज्ञानिकों को, पूरा बाबूडम में घुसा दिया। तो सीवी रमन ने का एक बहुत फेमस ये है कि वो इतने नाराज थे कि ये बोल रहे कि ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जिस तरीके से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का स्वतंत्र भारत में निर्माण हुआ है। और आप देख लीजिए जब हमने साइंटिस्ट लोगों को पूरा एक ऑफिस टाइप का एनवायरनमेंट में, और फिर एक प्रोफेसर रामन बहुत गुस्सैल थे, तो पंडित नेहरू के स्टैच्यू जगह जगह लगा दिए थे। तो पंडित नेहरू आने वाले थे बेंगलोर में, तो उन्होंने स्टैच्यू, गुस्से में आकर के स्टैच्यू को जमीन पर जाके उसको धाराशायी करके तोड़ दिया। एक्चुअली पंडित प्रोफेसर रामन ने नेहरू के स्टैच्यू को, उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा है वो पूरा बर्बाद होने वाला है आगे देश को, और ऐसा ही हुआ एक्चुअली। तो ये प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, और हम लोगों को क्या है, ग्लोरीफाई करने की हमें आदत इतना हो गई है हम लोगों को कि हम लोग उसको पीछे प्रश्न नहीं उठा पाते। हम बचपन से ही हम लोग ग्लोरिफिकेशन की आदत हो जाती है, हम उसके बारे में। और साइंटिफिक कल्चर है हमारी प्रश्न पूछने की, हमारे प्रश्न पूछने की परंपरा ही खत्म हो गई है। तो अब रामन का जो आविष्कार हुआ टेक्निक का, उसका प्रयोग भौतिक शास्त्री नहीं कर पाए। इट वाज कंसिडर्ड एज एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ केमिस्ट,
because lasers were not invented at that time. Professor Raman used very, like he used mercury lamp, all of you know. So it was useful for chemists actually. They were happy, but physicists never used it until it was lasers were invented. Then it was a big boom. And another big boom happened when this technique, tip enhanced Raman spectroscopy, was developed, as you can see on your screen, where we take gold coated STM tip, and then you can do localized Raman spectroscopy, right? I mean, in a normal macro Raman, you can use different kinds of aperture, and you can go. I mean, your resolution is limited by your lambda by 2, which is for visible light. You know that it will be roughly half of the let's say 250 nanometer. But here you can, with this technique, TIFF enhanced Raman, you can go really very deep. But another limitation of Raman is basically you can see only phonons close to the zone center. Because as you can see, this is the dispersion curve for indium nitride, and this is 2 pi over lambda, and this is K. So you can see wherever this phonon curve is crossing this 0 here, zone center, the gamma point, these points are only these points are seen in any Raman spectra. As you can see here, if you look at, this is gallium nitride, but you can see this is phonon spectra of gallium nitride. And if you see this cross section, for example, around 150, so you see it's not visible here. Anyway, this is around 300. You see line around 300. And here you can see around 550, 520. You see a lot of these Raman modes around 500. So, but here you don't have, you cannot see spectra in entire range. For that, you need to change the wavelength actually. So then came the technique. You can use tunable X-rays and other things where you can basically reduce the wavelength further. If you reduce the wavelength, you will be able to scan these areas where you can see a lot of this entire phonon spectrum. So that is a limitation of this technique, which has overcome now. And another limitation is described in this beautiful table, which is there in this book by Ricardo Aroca. And you can see the problem lies with the scattering cross section of this technique. These are actually scattering cross section of this different optical processes, which I listed out in my this slide here. So if you see this different techniques. If I compare all these techniques here and scattering cross section, if you see Raman scattering cross section, I think all students, they might know what is scattering cross section. So scattering cross section in centimeter, square centimeter is around 10 to the power minus 29, which is way smaller than scattering cross section for UV absorption or IR absorption. Even Rayleigh scattering cross section is 1,000 times larger than Raman scattering cross section. But if you use resonance Raman or surface enhanced resonance Raman spectroscopy or SERS, surface enhanced resonance Raman, so then there is a potential that we can improve it by several order of magnitude, which is in logarithmic scale. It is plotted here, and you can see how in comparison to out of 10 million photons, only 1 photon get Raman scattered. So when we were in COVID time, we got a lot of challenges from our collaborator at National Institute of Virology in Pune. We have with them virologists. We have collaboration since last 15 years. We published a lot of papers. So they challenged us that they got this, somehow they got them. That was COVID time, and a lot of sanctions were there. Countries were not helping each other. So somehow they paid a lot of money, and they got us 4 different strains of the spike proteins of different strains. And then they gave us challenge that can you develop rapid technique to screen any genetic mutation which are happening in these strains. So the technique is based on the identification of
these aromatic amino acids. All of you know that out of 20 amino acids, I think 5 of them are somewhere I have listed. Yeah, here only. Some of them are aromatic amino acids give very strong signature because of pi electrons in Raman. But we enhance the signals, Raman signals, if you use proteins. Again, I showed in my earlier slides that जो क्रॉस सेक्शन होता है, लो जेट एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत कम होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो उसको रामन का भी, अगर प्रोटीन का आप अगर रामन लेंगे या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आप रामन लेंगे तो बहुत आपको समस्या आएगी, आप ले नहीं पाएंगे. कभी भी आप प्रयत्न कीजिए, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसका तो बहुत अच्छा आता है. तो ये समस्या हमें कई सालों से आ रही थी, तो हमने कोविड टाइम में ये टेक्निक डेवलप किया. ऐसे हम लोगों ने पहली बार नहीं किया, एक और पेपर था. तो हमने एक किचन फॉयल जो होती है, एल्यूमिनियम फॉयल, उसकी एक साइड पे उसका हमने एएफएम से अध्ययन किया, एसईएम वगैरह किया, रफनेस वगैरह देखी. तो उसके ऊपर हमने प्रोटीन्स, ये स्पाइक प्रोटीन डाला तो उसका बहुत अच्छा एनहांसमेंट आया. तो फिर हमने उसको क्लिनिकल सेटिंग्स तक लेके गए और ये काफी अच्छा टेक्निक था वो हमने जो डेवलप किया. हम लोग उसको देख पाए कि क्लिनिकल सेटिंग्स में भी हम उसको और बहुत डाइल्यूट करके और उसमें पूरा खिचड़ी मिक्स करके, ब्लाइंड रन करके, बहुत सारे सैकड़ों बार उसको हमने टेस्ट किया और ये टेक्निक परफेक्ट की हमने. रामन को सरफेस इनहांस रामन को सिर्फ एक एल्यूमिनियम फॉइल पे आप ड्रॉप डालिए और आपको झट से मालूम पड़ जाएगा कि ये स्ट्रेन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. हाँ, ऑफ कोर्स देन उसके लिए स्पेशलाइज, अगर आपको सिर्फ वो जेनेटिक लेवल पे उसको मालूम करना, फिर उसके लिए फिर आपको दूसरा रन करना पड़ेगा, राइट. ये रैपिड थ्रूपुट के लिए आपको एक पोजीशन नहीं बता पाएगा जीन्स के लिए कि ये टायरोसिन कहाँ पर है, ट्रिप्टोफैन कहाँ पर है, ये सब चीज, ये पोजीशन नहीं बता पाएगा. पर अगर चेंज हुआ है तो आपको तुरंत बता देगा. ये टेक्निक था. दूसरा टेक्निक हमने आइजर पुणे के साथ डेवलप किया, रामन बेस्ड था. उसमें हमने अगेन सरफेस इनहांस रामन का प्रयोग किया. इसमें देखिए हमने क्या किया, गोल्ड नैनो रोड्स को एक वर्टिकल अलाइन किया. जैसे आप देखिए, बहुत इतना आसान नहीं है, दिखने में आसान लगता है पर ये काफी ये देखिए, ये 2 लेयर हैं. एक लेयर है ये खड़ी हुई है रॉड्स, देखिए एक लेयर है, दूसरी लेयर है. तो ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है, जो एक खड़ी ऊपर का जो टिप है ना, वो दिख रहा है आपको. तो 2 लेयर है. तो ये एंटीना के जैसे काम करती हैं. तो ये हमने सबस्ट्रेट तैयार किया, जैसे ये देखिए. तो ये यहाँ पर क्या होता है, सरफेस इनहांस रामन की वजह से यहाँ पे लोकल हॉटस्पॉट जनरेट हो जाते हैं, जिसको थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, पर थोड़ा आपको ये पेपर पढ़ सकते हैं या फिर मुझसे अलग से पूछ सकते हैं. तो ये सिमुलेशन में भी देखिए. तो अब इसमें कोई भी आप मॉलिक्यूल, हमारा इसमें ये टेक्निक जो थी, ये वाली जो टेक्निक हमने डेवलप की थी वो तो समाज के लिए की थी, पर ये वाली समाज के लिए थी. ये एक टेस्ट थी कि रामन टेक्निक कहाँ तक जा सकती है, कितना ज्यादा आप डिटेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए हमने बस एक चैलेंज लिया था कि रामन टेक्निक को हम कितना आगे लेके जा सकते हैं. तो देखिए ये 1 नैनो मोलर का सिग्नल है, ये 100 पिको मोलर का है, फिर इसके बाद में 1 पिको मोलर, फिर फेम्टो मोलर, फिर 10 फेम्टो. हम डाइल्यूट करते गए एटोमोलर. हम ना एटोमोलर तक जाकर के हम लोग ये टेस्ट कर पाए. ये देखिए थोड़ा जूम व्यू है रामन शिफ्ट का. तो ये हम लोग इसका मैन एंड मशीन दोनों को हम लोग टेस्ट करना चाहते थे कि हम कितना कम कितने सेंसिटिविटी इसके बढ़ा सकते हैं. हम लोग कुछ सिंगल मॉलिक्यूल्स की तरफ जा सकते हैं. ये बल्क टेक्निक है, पर हालांकि ये इसका कमर्शलाइजेशन इम्पॉसिबल है. ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था बिकॉज ये काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन था. तो उसके बाद में आऊंगा मैं माइक्रोस्कोपी. मैंने जैसे पहली स्लाइड में बताया 5 ज्ञानेंद्रियों का हम लोग, कितना समय है मेरे पास? हेलो, ओके. तो दूसरा जो एक इन्वेंशन हुआ यूरोप में 1931 में, अर्नेस्ट, उसका आपको सबको पता है, इंजीनियर था. उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उसको नोबेल प्राइज मिला 50 वर्ष बाद. 50 वर्ष बाद क्यों मिला? क्योंकि उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो लेंसेज इतने अच्छे नहीं थे. वो उसमें इमेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इमेज आ रही थी, पर लेंसेज हम जानते हैं, हमने 12वीं क्लास में पढ़ा है कि एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, वो इतने अधिक थे कि उसका प्रयोग बायोलॉजिस्ट बड़े खुश थे. बायोलॉजिस्ट, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट थे, वो बहुत नोबेल प्राइज निकाले उन्होंने 20-30 साल तक.
नेचर साइंस पेपर निकाले, क्योंकि उनके लिए तो बायोलॉजिस्ट के लिए तो एक सेल माइक्रोन लेवल से जाके कुछ भी उनको दिखा दो तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। पर केमिस्ट और फिजिसिस्ट लोगों को ये बहुत ज्यादा रोचक नहीं लग रहा था, कि वो उनको लगा यार ये क्या चीज है, इतना तो हम इतना, क्योंकि वो जानना चाहते थे एटम्स और मॉलिक्यूल तक, और या फिर कुछ नैनोमीटर स्केल तक एटलीस्ट जाना चाहते थे। उसके बाद में ऑटो शेजर करके एक जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने कैलकुलेशन दी, उन्होंने गणितज्ञ ने कैलकुलेशन दी कि कैसे इलेक्ट्रॉन लेंसेज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी गुजरात में ये बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं, यही काम वहां पे उसके एक्सपर्ट्स हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वहां पे, बहुत इलेक्ट्रॉन लेंसेज के जो ये और या फिर ये आईपीआर है, प्लाज्मा रिसर्च लेबोरेटरी। प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंसेज चाहिए, मैग्नेटिक बोटल्स। तो वही उसी तरह अब तो वो तो ज्ञान अब बहुत डेवलप हो गया है, पहले वो इतना ज्ञान नहीं था। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लेंसेज को कैसे परिष्कृत किया जाए, तो वो जब वो किया गया तब जाकर के लोगों को उसके उपयोग के बारे में समझ में आया। तो जब ये रस्का जी अपने मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उनको ये नोबेल पुरस्कार का अवसर मिला, और उनको ये दिया गया जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के जो इन्वेंटर थे, उनके साथ उनको जो आईबीएम के जो साइंटिस्ट थे बेनिंग एंड रोरर, उनके साथ दिया गया, जो एसटीएम और एएफएम उन्होंने डेवलप किया था वो टीम ने। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्वतंत्रता से पहले 1946 में 1948 में एशिया का पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भारत में बन चुका था, कलकत्ता में। अब आप ये देखिए, नेहरू जी ने जो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर नेहरू जी ने जो रामन जी ने भविष्यवाणी की थी, नेहरू जी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और ये साइंटिस्ट जो थे देश छोड़ के जाना पड़ गया उनको, वो लंदन वापस चले गए, एन दास गुप्ता, और उसके बाद में वही रिटायर हो गए। ये सड़ा रहा कुछ, ये कमरे में जाके बंद हो गया, सड़ने लगा, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ, कोई स्टार्टअप नहीं था, कोई कल्चर नहीं था, 50-60 साल तक कोई पूछने वाला नहीं था इसको। इतना बर्बादी हुआ साइंस का 1947 के बाद में। तो रामन का प्रेडिक्शन, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है हमारी विज्ञान यात्रा, हम विज्ञान यात्रा की बात कर रहे हैं तो हमें ये कठिन प्रश्न पूछने चाहिए। तो हमारी विज्ञान यात्रा हमारे देश को की बर्बादी में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे सबसे महान वैज्ञानिकों ने कहा है, ये लिखा है उन्होंने, सीवी रामन ने। तो ये इस बारे में हमें जानना चाहिए, और हमें ऐसी गलतियां हम आगे ना करें कि हम इतने साल पिछड़ गए। ये जीता जागता उदाहरण है, आपके 2 डिस्कवरी है रामन की, और ये देखिए ये एशिया का पहला था। अब हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं इतने सालों में माइक्रोस्कोप से बाहर से लाने के लिए, और रामन स्पेक्ट्रोमीटर और ये इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप बाहर से लाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक पहले जो हमारे जो विज्ञान भारती के जो थे संयोजक, उन्होंने जो विभाग प्रमुख थे, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था कि ये हम क्या सीख रहे हैं इससे। तो उसके बाद में तो ये सारी टेक्निक जो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेस पे डेवलप हुई। अच्छा, मैं एक और अपनी जो मेरी एक बहुत क्लोज टू माय हार्ट टेक्निक जो है, मैंने लेबोरेटरी बहुत काम किया है, उसके बारे में भी आना चाहता हूँ। ये सारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक्स हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप जानते हो इससे आप बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हो। इतना समय नहीं है, 5-10 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा अपना काम बताना चाहता हूँ। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी पे हमारे लेबोरेटरी में कितना काम हुआ है। ये एसटीएम के लिए बीनिंग एंड रोरर को नोबेल प्राइज मिला था, जैसे मैंने बताया है। बीनिंग एंड रोरर को 1986 में, एएफएम के लिए जो भी है, जो को इन्वेंटर थे, उन्होंने दोनों टेक्निक की डेवलप की। तो ये आप एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से आप बहुत कुछ आप अध्ययन कर सकते हो। यू कैन स्टडी मैग्नेटिक डाइपोल्स, you can study electric dipoles. One of my student Dinesh has recently studied his bismuth oxychloride ferroelectricity on these films using electric force microscopy and Kelvin probe microscopy, and we published long back one. So you can study a lot of things actually. You can study force, you can do force mapping, you can study charges, you can do tunneling here. So this is one of my favorite techniques. And when we bring so this technique is basically, you have a scanning probe which is made of typically silicon for atomic force microscope,
In case of STM, it is metallic, and then you bring it closer, and then when you bring it closer, so these are the forces at long range. You know that electrostatic forces start working, at very long range, and then when you bring closer to the surface, around 10 nanometer, you have van der Waals force range, and then you have these exchange forces and chemical forces, and finally you have these repulsive forces, which we say contact, actually Pauli exclusion principle. So you can see that last few atoms of the tip and last few atoms of the surface, they interact with each other. Based on their interaction, van der Waals interactions, we map the forces in this technique. And so these are basically photographs of the tip and cantilever. So then we can study chemical forces also, of course. So you can see different functional groups. Suppose there are different functional group lying on the surface. So we can study, actually we can quote complementary molecules on the tip, and then we can study the different functional groups using this technique. But these capillary forces are basically a problem. Capillary force marks this chemical force microscopy. So there are two solutions to that. Either you completely remove water. For that you have to use this technique in complete vacuum, or you do it in liquid mode, right? So then so you basically you have water liquid everywhere, so you have no capillary actually. So this is our research work which was published in 2008. And this person who did this research, Umesh, my student, who was actually a professor in nanoscience department in Gujarat Central University, my student, he left the department, I think it is in Gandhinagar. He had invited me also. So this is his work actually, extracellular bacterial synthesis of protein functionalized ferromagnetic cobalt oxide nanocrystals and imaging of self-organization of bacterial cells under stress. So this was highlighted, his work was highlighted in many cases. So you can see his name here, Umesh Kumar. So he was in Gujarat for several years. He gave his services as a professor of nanoscience. So in this technique, actually what we did, we looked at, so these are actually marine microbes. And if you look at, they are very happy, isolated. So you can see there are two columns here. In one column you see, these are actually electron microscopy images. One column you see there are happy microbes, they are isolated, well isolated. In another case, they are stressed and they are clumped together as if they are fighting for survival. You can go back to my first slide where the journey of humans actually from evolution basically. So we basically, our first purpose was our survival actually. So this survival happened when these microbes were exposed to this cobalt acetate. So so we wanted to study basically what is the effect of cobalt acetate on these microbes. We knew that we are forming this cobalt oxide nanoparticles in this process, but we wanted to investigate what is happening to the cells. So then we used this atomic force microscopy, real-time nanomechanical topographical mapping on live bacterial cells. So this was beautiful paper. Vivek is now in one semiconductor company in US, Micron or some other company. So together they did a lot of this AFM force spectroscopy measurement, and then so this work was with the former CSIR this chemical Calcutta. There is a lab, IICB, I think, chemical. So he was India's top cancer expert. So we did this work in his collaboration. So in this, we did atomic force microscopy studies on cancer cells. So we wanted to use this technique to look at कैंसर सेल में कैंसर सेल में नॉर्मल सेल में क्या अंतर होता है, और उसके दवाओं जो औषधियां हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत तरह तरह की औषधियां हैं और अलग केमिकल हैं. जब हम औषधि लगातार अलग अलग डालते हैं तो सेल्स की जो फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है. तो ये देखिए हम लोग ये फोर्स मैपिंग कर पाए. तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, पर इसका कहने का तात्पर्य है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से आप कैंसर सेल के या कोई और कोशिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. और ये भी एक कैंसर डायग्नोसिस की एक बहुत अच्छी टेक्निक है. ये हमारा NIV के साथ काम था. डेंगू वायरस पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा. इसको इवन NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसने भी इसको नोट किया.
और इस पे गाइडलाइंस चेंज हुई। हमने इसका अध्ययन किया था कि डेंगू वायरस में क्या प्रभाव होता है। डेंगू वायरस जब रक्त कोशिकाओं पे इन्फेक्ट करता है तो रक्त कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करता है, कैसे वो अंदर घुसता है, तो ये पूरा हमने इसको स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप यूज किया। तो ये बहुत अच्छा एक कोलैबोरेटिव वर्क था इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे उनके साथ में। इस काम में हमने अध्ययन किया कि अभी भी ये PIL जो है ना, मोदी गवर्नमेंट ने ये एक प्रोजेक्ट दिया है फार्मा कंपनीज को पेनिसिलिन ये भी बनाने के लिए, जो प्रोडक्शन PIL जो होता है ना, प्रोडक्शन जो स्कीम जो है उसमें। तो हमने बहुत अध्ययन किया था कि ये यीस्ट सेल में क्या प्रभाव होता है जब हम ये जो यीस्ट सेल हैं उस पर सीटैप का क्या प्रभाव होता है, उनकी सेल वॉल का परफोरेशन कैसे होता है, कैसे हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हमने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का यूज किया हमने उसके लिए। ये लास्ट काम में दिखाऊंगा, ये भी एक जैक्स पेपर था और ये वाला ये पब्लिश हुआ था। ये उसमें हमने ये फेरोइलेक्ट्रिक टेट्रागोनल फेस को स्टडी किया बेरियम टाइटेनेट नैनो पार्टिकल्स के लिए। ये एक काम था एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के लिए, APL में पब्लिश हुआ। ये बहुत अच्छा काम था। ये प्रोफेसर वेणुगोपाल राव हैं, जो आप जानते हो, फॉर्मर IIT दिल्ली के डायरेक्टर थे और उससे पहले IIT मुंबई में थे। उनके साथ हमारा बहुत लंबा, बहुत प्रोडक्टिव कोलैबोरेशन रहा, बहुत पेपर हमने पब्लिश किए। तो उनके साथ ही हमने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी और पीजो रिस्पांस फोर्स माइक्रोस्कोपी है, इस पर बहुत काम किया। तो ये मैं लास्ट स्लाइड पर जाऊंगा, ये भी उन्हीं के साथ का काम है। तो मैं इसके साथ अपना ये श्रीमद् भागवतम का एक बहुत अच्छा मुझे लगा एक श्लोक है। ये देखिए ऋषि क्या कहता है, ऋषि इतना ज्ञान के बाद में भी ये क्या कहता है। ये मेरी समरी स्लाइड है और इसमें ये आपको, डिस्पाइट ऑफ सेंचुरीज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जायंट्स, हमें आगे यहाँ से कहाँ जाना है। तो despite of centuries of contribution from giants, we hardly know even a small fraction, sorry, there is a typo, fraction of the mystery of our universe. और ये हमने नहीं किया, ये ऋषियों का। अब अगर आप ऋग्वेद से भी चालू करें, ऋग्वेद ने ऋषि इतने हम्बल थे, उन्होंने इतना सारा ज्ञान देकर के फाइनली ये कहा है कि ओ ग्रेट किंग, दीज आर एंडलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल क्वालिटीज, गुणास हम जो संस्कृत में बोलते हैं, ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, even though not even a person living as long as Brahma is capable of, ब्रह्मा की आयु बहुत ज्यादा मानी जाती है, अधिक मानी जाती है। उन्होंने कहा कि ये इवन ब्रह्मा के परे है कि इसको हम एक शब्दों में पिरो पाए या फिर हम उसको पूरा समझ पाए। I nevertheless shall try to explain in terms of names, नाम रूप में और प्रोपोर्शन में, तन्मात्रा में, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करने का कुछ प्रयास करूंगा। एंड अव्यक्त से व्यक्त की कैसे आता है, जैसे ये भूगोलकम जो है, टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड, जो ये फ्लैट अर्थ वाले जो 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 लोग थे, उन्होंने बाद में फ्लैट अर्थ का कंसेप्ट आया। हमारे तो शास्त्रों में पृथ्वी को गोल तो बहुत पहले से ही माना गया है, भूगोलकम एक्चुअली। तो ये इतना हमें एक नम्र बनाता है। तो ये जो श्लोक पढ़ करके हम शास्त्रों का, हम वैज्ञानिक नम्र ही हो जाते हैं कि हमें बहुत जानना बाकी है। इसके लिए मैं इसके साथ में अपना ये समाप्त करता हूँ यहीं पर, और कोई भी प्रश्न के लिए कोई भी प्रश्न पूछिए तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। Back to the organizers. Yeah. Thanks, Professor Poddar, for delivering a lecture on a novel topic in an interesting manner. Now, if there are any questions from the audience, students, few questions are welcome. No questions? Then thank you very much, Professor Poddar. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now our second invited speaker is Dr. Pravina Pawar. She is working as a professor at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad. I know her since 1998. His subject of interest is gamma ray interaction with matter. Now, she is well-known nuclear physicist.
She has completed 2 major projects funded by DAE-BRNS and UGC. She has published more than 150 research paper, excellent research paper in internationally reputed journals. 40 students are awarded under her guidance, and presently 5 students are working. So let me welcome Professor Pawar to deliver a lecture on interaction of gamma rays with matter. Welcome, Professor Pawar. Thank you, sir. Now I will start my lecture. Good afternoon, everybody. To this national level series of conference, Vigyan Yatra 2024, a travel of scientific young Indian minds towards Vikshit Bharat. Myself, Professor Pravina Sanjay Ugile Pawar, in the Department of Physics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Today, I am going to present the topic gamma ray interaction with matter. The outline of my presentation is that first radiation, then life and radiation, nature and origin of radiation. After that, types of radiation, what are the radiation units, standards, ionizing radiation, health effects, categories of exposure, reducing exposure, radiation protection. After that, the interaction of ionizing radiation with matter, then experimental setup and measurements, and finally the softwares for shielding effectiveness. So this radiation is energy that travels. Ma'am, we cannot see the full screen. Radiation is energy that travels in the form of waves or particles and is part of our everyday environment. Radiation is everywhere. It is in the air we breathe, the water we drink, and the food we eat. Radiation is energy that comes from a source and travels through space at the speed of light. This energy has an electric field and a magnetic field associated with it and has wave-like properties. You could also call radiation as electromagnetic waves. Life and radiation. All life is dependent on small doses of electromagnetic radiation. For example, photosynthesis and vision use the sun's radiation. People are exposed to radiation from cosmic rays as well as to radioactive materials found in the soil, water, air, and also inside the body. Human-made radiation sources are widely used in medicine, industry, and research. It can be either useful or harmful, depending on its use and control. Life and radiation. All life is dependent on small doses of electromagnetic radiation. For example, photosynthesis and vision use the sun's radiation. People are exposed to radiation from cosmic rays as well as to radioactive materials found in the soil, water, food, air, and also inside the body. Human-made radiation sources are widely used in medicine, industry, and research. It can be either useful or harmful depending on its use and control. Life and radiation. Radiation in healthcare. Radiation is used in healthcare setting in procedures to help healthcare providers find causes of symptoms, diagnostics, and to manage or treat some health conditions. This figure shows the CT scan for radiation. Radiation in everyday objects, air travel, airport security screening, then building materials, cigarette smoking and radiation, ultraviolet radiation, wearable computers and wearable technology. Radiation in nature. Radon and your health.
radiation from space, cosmic radiation, then radiation from the earth, terrestrial radiation. Nature and origin of radiation. There are various kinds of radiation which can be classified in electromagnetic radiation and particle radiation. The ionizing radiation and non-ionizing radiation visible, so cosmic rays, gamma rays, X-ray, ultraviolet visible, then infrared, radar, FM, TV, short wave, broadcast, power transmission, non-ionizing radiation. This wavelength in meters for high energy electron volts and low. Nature and origin of radiation. Natural sources of radiation will live in a radioactive world. There are many natural sources of radiation which have been present since the earth was formed. The three major sources of naturally occurring radiations are cosmic radiation, terrestrial radiation known as sources in the earth's crust, and international sources or sources found in the human body. The types of radiations are non-ionizing radiations and ionizing radiations. In case of non-ionizing radiations, the ultraviolet, visible, infrared, microwaves, radio, and TV power transmission. And for ionizing radiation, radiation capable for producing ions when interacting with matter, X-rays, alpha, beta, gamma, and cosmic rays. See this block diagram for types of radiation. Radiation, types of radiation, ionizing radiation, the particle beams, charged particles beam directly ionizing radiations. For alpha particles, beta particles. For alpha particles, helium nuclei ejected from a nucleus. Then for beta particles, electrons ejected from a nucleus, proton beams, deuteron beams, tritium beams, heavy ion beams, and for charged meson beams, fission fragments, etc. And for uncharged particle beams, indirectly ionizing radiation, uncharged meson beams, neutrino, and neutron beams, etc., produce in nuclear reaction accelerators. The electromagnetic waves indirectly ionizing radiations, the X-rays and gamma rays, generated outside a nucleus, and this gamma rays emitted from a nucleus. Non-ionizing radiations, electric waves, microwaves, infrared, visible rays, ultraviolet rays, etc. See this figure for types of radiation, alpha, beta, and gamma. In case of non-ionizing radiations, the sources are ultraviolet light, visible light, infrared radiation, microwaves, radio and TV, and power transmission. And for non-ionizing radiation, examples are ultraviolet, black light, induced fluorescence in some materials, vision, very small portion that animals use to process visual information, heat, infrared, a little beyond the red spectrum, radio waves beyond infrared, microwaves, electrical power transmission, 16 cycles per second with a wavelength of 1 to 2 million meters. Ultraviolet sources, the sunlight, most harmful ultraviolet is absorbed by the atmosphere, depends on altitude, fluorescent lamps, electric arc welding can damage the eye cornea. Then this eye damage from sunlight and skin cancer. The ultraviolet effects, high ultraviolet kills bacterial and other infectious agents, high dose causes sunburn, increased risk of skin cancer, pigmentation that results in suntan. Suntan lotions contain chemicals that absorb measured in candles or lumens. Infrared radiations, energy between 750 nm to 0.3 centimeter. The energy of heat is transfer of energy, can damage cornea, iris, retina, and lens of the eye, glass workers, glass contract.
microwaves and radio waves, energy between 0.1 centimeter to 1 kilometer, a variety of industrial and home uses for heating and information transfer, radio, TV, mobile phone, etc. Produced by molecular vibration in solid bodies or crystals. Health effects, heating, these long-term effects be studied. Electrical power, standards in homes and business, highest level of exposure from electric power generation and distribution system, high voltage power lines, medical system, magnetic imaging, acute health effect, shock, and long-term health effects appear to be few but may some data to suggest adverse effect. Ionizing radiations. The ionization radiations capable for producing ions when interacting with matter. In other words, enough energy to remove an electron from an atom. The sources are X-rays, radioactive material produced, alpha, beta, and gamma radiation ना तब भी सर्टिफिकेट आ जाएगा from the sun and ऐसा space. पिछली बार तो फिलहाल इन्होंने किया था 2020 में नहीं Ionizing radiations that causes this radiation, particles, beams, and electromagnetic waves, alpha particles, beta particles, X-rays, and gamma rays. Helium nuclei ejected from a nucleus, then beta particles, electrons ejected from a nucleus, neutron beams produced in nuclear reactors, accelerators, and proton beams produced in accelerators, etc. X-rays generated outside a nucleus, X-rays generated when electrons within an atom are caused to travel between orbits by incident electrons are called characteristic X-rays, and gamma rays emitted from a nucleus. This alpha particle, proton, neutron for helium-2. Alpha particle is nucleus of helium. Alpha particles, 2 layer, internal exposure, bone, lung. Small electrically charged particles similar emitted with various kinetic energies can cause internal hazard of ignited. This figure for gamma rays, it is a penetrating form of electromagnetic radiation. Gamma rays, electromagnetic photons or radiation identical to X-rays except for source. Emitted from nucleus of radioactive atoms, spontaneous emission, emitted with kinetic energy related to radioactive source, highly penetrating, extensive shielding required, and serious external radiation hazard. This figure we know ionizing radiation alpha, beta, and gamma for paper, plastic, steel, and foil. Reactive materials. Items created in nuclear reactor or accelerator. Radioactive materials is unstable and emits energy in order to return to a more stable state. Particles or gamma rays. And half-life, it is the time for radioactive material to decay by its half of its value. Radioactive material, thorium, X-rays, overlap with gamma rays, electromagnetic photons or radiation produced from electrons or free electrons. Usually, electrons strike a target material inside an X-ray tube. Highly penetrating, extensive shielding required external radiation hazards discovered in 1895 by Rontgen, this name of scientist. X-rays,
radiation units exposure. This is coulomb per K related to energy. Then absorbed dose, gray amount energy absorbed, equivalent dose severed, makes different sources of radiation equivalent. Standards: US National Council on Radiation Protection NCRP, International Council on Radiation CRP, occupational exposure guidelines, 100 millisievert over 5 20 millisievert per year with maximum of 50 millisievert in a year. General millisievert per year, guideline 1 millisievert. Ionizing radiation health effect. The use of high energy ionizing radiation is continuously increasing in many sectors like industries, diagnostics, nuclear research establishment, etc. Above certain levels and can be help and affect the human body depending on their frequency. Thus, the actual problem is when the people exposed to large amount of radiation in extraordinary circumstances, as they have deleterious effects in human life and other materials. See this figure for categories of exposure: occupational exposure, public exposure, and medical exposure of patients. In case of occupational exposures, exposure of workers incurred as a result of their work, with the exception of excluded exposures and exposures from exempt activities, medical exposure, and background. For public exposure, all exposures of the public other than occupational exposures and medical exposures of patients. Medical exposures of patients incurred by patients as part of their own medical or dental diagnosis or treatment. Volunteers helping in the support and comfort of patients in distance increases the distance. By the measurement of X or gamma rays. See these sources: disc shape and palette shape. These are the sources, and this gamma ray spectroscopy system with software and dedicated computer, which is used for the taking the data for different samples like biological sample, any CHNO based compound, metals, oxides, alloys, or any sample. For that purpose, a scintillation counter is used. In 1903, Crookes in England and Elster in Germany independently reported that alpha particles impinging on zinc sulfide screens produce individual flashes which could be observed through a microscope. The first attempt to count alpha particles of light, that is scintillation generated in diamond by them, was made by uh, Regner in Germany in 1900. We know this PMT, this photomultiplier tube, it is present in the scintillation counter. There are diodes, and when photon falls on this photo, arranged in such a way that from first to second it gives 1 to 2 electron, from 2 to third it gives 4 electron. Again, like that, for large diode there are several number of more electrons as compared to first one, and as its function is to multiply, it is called as a photomultiplier tube, and it is present in the scintillation counter. It consists of the luminescent material known as scintillator, reflecting layer such as aluminium foil enclosing the luminescent substance to facilitate the collection of light, light pipes, the photomultiplier tube, amplifier, illuminator, electronic circuit record the output pulses.
This photomultiplier tube, it is nothing but a human eye. It is replaced by an electronic device, that is PMT. It is a high sensitive photocell. It converts light energy into electrical energy. A semi-transparent CSSB cathode is deposited. The ejected photoelectrons are accelerated. Electrode D1, they are collected and liberate more secondary. So there are D1, D2, etc. There are 1 to 13 or 1 to 16 diodes present in the PMT. It depends on the size of that photomultiplier tube. It has 13 or 16 diodes maintained as a positive potential at 100 volts. Scintillators, the substance which scintillate when bombarded by radiations, are named as scintillators, also called phosphors, and are mainly classified as organic crystal, organic liquid, plastic, inorganic crystal, and gases. Again, this PMT here, the real position of the diode 1 to 13 or 16. See this high energy photon, it falls on the photocathode, and they are focused in such a way that it multiply, and lastly 1000 more number of electrons are obtained as compared to first one. Interactions of ionizing radiation with matter, photons. For energies lower than 50 MeV, there are three main processes by which photon interact with matter. These processes are photoelectric effect, Compton scattering, and pair production. This photoelectric effect, incident photon is totally absorbed and ejects electrons from atom. This effect dominates with low energy photons interacting with heavier elements. In Compton scattering, electrons is also ejected, but incident photon survives and is scattered by losing some of its energy. In water or biological tissues, this effect dominates at energies above 15 keV. And the last interaction process, it is pair production. There are so many interaction processes, but out of this, only these three processes are important: photoelectric, Compton, and pair production. In this pair production is a process in which its energy is converted into electron-positron pair. This interaction starts occurring at energies higher than 1 MeV. Unlike electron, positron will eventually disappear, annihilating one electron of surrounding material. Positron-electron pair is converted into two photons with energy of about 0.5 MeV. Gamma can be attenuated but never fully stopped. This figure shows invisible gamma path, electron and positron, E minus, E plus. Trajectory of gamma ray in a bubble chamber. Photons deposit their energy in matter by transferring it to charged particles. The bubble chamber picture above displays the birth, life, and death of an individual gamma photon. The gamma was produced at point A during a collision with a particle organizing from an accelerator. After a certain distance traveled without any interaction, the gamma interacts at point B. It transfers its energy by creating an electron-positron pair. The presence of a very strong magnetic field causes two oppositely charged particles to spiral and gradually lose their energy before coming to a complete stop. The neutral gamma rays leave very different effects on their surroundings from those left by charged particles, whereas alpha and beta rays transfer their energy to the environment by a gradual process. Gamma photons transfer either everything or nothing. They have no effect until they interact with a nucleus or an electron, in which case they cause charged particles to move, thereby indirectly transferring their energy to the medium. Gamma photons have three ways to interact with matter: photoelectric effect, Compton effect, and pair production. This photoelectric effect already we have explained previously. This photoelectric effect is the most common way for low energy photons to interact with matter. It also takes place with gamma rays. A gamma collides with an electron orbiting an atom, explaining
the electron from its atomic orbit. The electron is followed by rearrangement of the atom's electronic cohort to fill the gap. In the process, the photon vanishes. See this figure for electron away from its atomic orbit. Then photoelectric effect, the photon is absorbed and electron is expelled from an atom. The photoelectric effect is the most common form of interaction when the energy of the gamma ray is the same order of magnitude as the energy binding atomic electrons to the nucleus. The gamma ray can then eject an electron away from an atom, sharing its energy between the electron and the excited atom. The gamma ray disappears, but the atom releases later on its newly acquired energy by emitting a fluorescent photon, generally an X-ray. When an outermost electron replaces an internal expelled electron, energy is released in the form such as fluorescence photon. This Compton effect, this process, in this Compton effect, when a photon of energy h nu is incident on this target material, then the scattered photon is having energy less as compared to incident photon energy because some part of energy is going to recoil electrons. This figure shows the collision of the gamma with a electrons. Compton effect, elastic collision with an atomic electron. When the gamma photons have higher energy, the dominant interaction becomes the Compton effect, which is the collision between an incoming gamma ray and an electron. The initial energy is shared between the photon and the electron, which gradually slows down by ionizing the atoms around it. Much like a beta electron, the newly formed gamma ray propagates in turn through the material until it loses its energy by colliding with an other electron. A pair production, there is a formation of pair, is in the production of a pair of mutual antiparticles, an electron and a positron. This process only takes place for photon energies above 1.02 MeV. The minimum energy required to create the two particles, according to the E equal to m square, Einstein's mass formula, the majority of gamma coming out of radioactive decay do not reach this threshold. Pair production occurs mainly with more energetic gamma produced by accelerators on found in cosmic rays. This figure for gamma due to the electromagnetic field of a nucleus. An electron-positron pair formation, when the energy of gamma ray exceeds 1 million electron-volts, the third effect comes into play in which the photon interacts with a nucleus to produce an electron and a positron. The gamma ray energy is transferred into matter with the strong electrical field of the nucleus, acting as a catalyst. This pair production occurs more frequently than the Compton effect for high energies, but remains marginal in the field of radioactive phenomena. Gamma attenuation. Now, we know that the change in intensity is directly proportional to incident intensity and change in thickness. Now, in order to remove that proportionality constant, the proportionality sign takes some constant, and that constant is nothing but mu, and this mu is nothing but a attenuation, linear attenuation coefficient. And if we divide this linear attenuation coefficient by its density, that is rho, then we can obtain the mass attenuation coefficient. So this gamma attenuation, the exponential attenuation of a narrow beam of gamma rays passing through an homogeneous layer of material is characterized by an attenuation coefficient. The higher this coefficient, the faster is the attenuation. The attenuation coefficient is a measure of the interaction probability called cross section. This cross section, it is denoted by sigma of the gamma rays with the matter or the target. It is obtained by summing the contributions of the three effects, that is photoelectric effect, the Compton effect, and to a lesser degree pair production. There is usually a significant probability that gamma rays travel a great distance without being involved in any interaction. As a result, gamma radiation is both more penetrating and more difficult to stop than either alpha or beta. In laboratories and near accelerators, the custom is to use thick lead screens.
a cheap and effective material, as gamma rays are more easily absorbed by heavier nuclei. See this for photon energy, carbon and lead. These are the metal and interaction cross section. Sigma is calculated within the range 1 keV to 1 MeV, and for lead also 1 keV to 1 MeV. Compton, Rayleigh and sigma photoelectric effect is given. Competition between this Compton and photoelectric effect. The two main processes of gamma interaction with matter complete in the energy range of radioactivity gamma from a few keV to 1 to 2 MeV. As can be seen on the examples of carbon and lead, the outcome of the competition depends on the gamma energy, the electron density and the atomic nucleus electric charge Z. The interaction probabilities for photoelectric effect are far higher from those of the Compton effect in the low energy range. Compton effect becomes dominant for the energy above 600 keV for lead and only 20 keV for carbon. Gamma rays are much less localized than those of alpha rays. They are felt in larger volumes. This is why the gamma rays of cobalt-60 are used, for example, for food sterilization and disinfection of low dose of gamma are used for medical diagnosis because they are less harmful in the case of internal radiation. For this reason, this technetium-99m, which is one of the few nuclei that emits only gamma, is highly prized. See, this narrow beam good geometrical setup. This setup is very important while taking data. This is NAITL scintillation detector based gamma ray spectroscopy system with software and computer multi-channel analyzer. Here, while taking data, the position is source, absorber and detector. The radiation that are coming from the source, they falls on the absorber. Any absorber you can select. For example, biological materials, proteins, vitamins, carbohydrates, fatty acids, enzymes, or alloys, or pure metals, wood sample, lead, any samples you can select as an absorber. So the radiations that are coming from the source, they falls on the absorber and it is detected with the help of this detector, scintillation counter. The experimental procedure, first there is a selection of sample, after that taking data sample, then analysis of data, after that comparison of experimental data with theoretical data obtained by XCOM program. For the selection of sample, any CHNO base, because my actual research project and work is on biomolecules, that is because biomolecules are the building blocks of our body elements and it is having multidisciplinary applications. It is used in medical field, then food preservation, agriculture fields and for shielding purpose. In medical field, it is, for example, there is a cancer patient. So, to decide the radiation to be delivered without any harm to normal cell, it is necessary to have a precise knowledge of this gamma ray attenuation coefficient data. If we know the gamma ray attenuation coefficient data, then it is easily, the patient is easily treated. So this is the medical application. Then for soil agriculture field, this technique helps to estimate the soil moisture contents. The use of this attenuation coefficient data is used for non-destructive monitoring of soil moisture, which helps to optimize irradiation practices, promoting water use efficiency and crop yield. And for food preservation, gamma irradiation helps to extend the shelf life of food products by inhibiting the growth of bacteria, fungi, and insects. It reduces spoilage, ensuring food safety and minimizing the need for chemical preservative. The significance of using this mass attenuation coefficient in food preservation lies in its ability to extend the shelf life of items, maintain the quality of the treatment food. It is an approved and safe method used by regulatory bodies when applied within specified dose. And for shielding purpose, this
mass attenuation coefficient data is used if we consider the sample of different types of cement. Then by knowing the value of mass attenuation coefficient, it is easy to predict that which cement is best for shading. Similarly, so in this way, it is having multidisciplinary application. But actually, my research topic is for biomolecules. So that's why I have selected CHNO-based compounds, proteins, vitamins, carbohydrates. Then that sample, it is taking data by using this NAITL scintillation detector and analyzing that data. By analyzing that data, we can calculate the linear attenuation coefficient by using formula mu equal to minus ln I by I0 by t. This mu is nothing but a linear attenuation coefficient. And then what is I here? I0 is the initial intensity and I is the intensity after transmission. T is the thickness. So by knowing all these value, we can calculate the linear attenuation coefficient. And Z effective. See here, why it is necessary to calculate Z effective and not Z? Because it is a not pure metal. If pure metal is there, then only Z is sufficient. But it is CHNO based compound, so carbon is having different atomic number, hydrogen is having different atomic number, nitrogen is having different, and oxygen is having different. So in order to have a total effective atomic number, it is necessary to calculate the Z effective. So point Z effective is calculated using this formula 0.28 A effective in raised to 1.329 minus 0.0471 ln E and E raised to the power 0.092. Then also calculate the molar extension coefficient, that is epsilon. It is by using this formula 0.4343 Na into sigma total. Here Na is nothing but a Avogadro's number and sigma total is nothing but a total interaction cross section. Ne it is equal to Na into Z effective by A effective. Again here Ne is the effective electron density and Na Avogadro's number and the ratio, that is Z effective by A effective, which is always 0.5 because atomic mass number is twice the atomic number. So that ratio is nearly 0.5. Hence the total interaction cross section sigma total, it is equal to mu A by N into 10 raised to the power 24. So after analyzing of this data, make the comparison of this experimental data with theoretically obtained data by using XCOM software, XCOM program. So mu, that is linear attenuation coefficient, mass attenuation coefficient, mass energy absorption coefficient, total interaction cross section, effective atomic number, effective electron density, and molar extension coefficient. All these values are calculated. Finally, these are the equations. These are the equations. First and second, the equation is used for the calculation of attenuation of beam is described by the following equation: I equal to I0 e raised to the power minus mu t. Then linear attenuation coefficient, it is calculated mu equal to 1 by t ln I0 by I. Then the mass attenuation coefficient is described by the following equation: mu m or mu by rho, the meaning of both term is same, that is mass attenuation coefficient centimeter square per gram, and it is calculated by using this equation 1 by mu t ln I0 by I. And total interaction cross section, that is sigma total, is calculated by the relation sigma total, it is equal to mu m by Na, mass and divided by Avogadro's number. Then the next equation value, that is effective atomic number Z effective, it is equal to 0.28 A effective 1.329 minus 0.047 ln e raised to the power 0.092. And finally, the molar extension coefficient is described by the following equation. It is denoted by epsilon. Epsilon, it is equal to 0.4343 Na into sigma total. Na is the Avogadro's number and sigma total interaction cross section. Actually, all these are the derived parameters. Our basic parameter is mu by rho, that is mass attenuation coefficient, which is obtained experimentally and as well as theoretically by using XCOM and WinXCOM program. And then all these derived parameters like mu is calculated by knowing the density of that substance, and then sigma total, Ne, Z effective, epsilon, they are calculated.
The values of electron density is Ne equal to Na into Z effective by A effective. The software for shading effectiveness, we can determine the shading capabilities of materials experimentally using different detectors based on their interaction with matter. We can determine shading effectiveness of material that are constantly needed to protect human and life from these effects of radiation theoretically. The XCOM software and WinXCOM software. XCOM photon cross-section database. This introduction about XCOM, NIST, National Institute of Standard Technology, Standard Reference Database, MJ Berger and JH Hubel, SM Seltzer, they describe this formula. How to run this program? First, suppose we are going to consider the element chromium, then identify the material, compound or mixture, whether it is compound or mixture or alloy. So if it is pure element, then you have to insert its formula. For example, chromium, then you have to insert like Cr. And if it is compound, then C2H5, like that. You have to insert in that column as a compound. And if it is mixture, then click on that button. Method of entering additional energy, it is optional. Enter additional energies by hand, that is from 0.01 to 1.5 MeV, that is 10 kV to 1500 kV. Then additional energy from file, here browser must be field upload compatible. Then submit that information. After submitting the information, fill out the form to select the data to be displayed. Select by only 1 to 100 atomic number or symbol. If you can enter both, for then lead 82 also and PB, then we cannot obtain the data. You have to enter either PB or 82. Then and then only the mass attenuation coefficient by using XCOM software is obtained. The options for output units, all quantities in centimeter square per gram, all quantities in barn per atom, and partial interaction coefficients in barn per atom, and total attenuation coefficient in centimeter square per gram. See this graph for chromium. So such type of graph is obtained here. As photon energy increases, the value of this mu by rho mass attenuation coefficient goes on decreasing. This data is obtained by using XCOM software. Atomic number 24. To download data in this array form, choose a delimiter and use the in the table heading. After downloading, save the output by using your browser save as a feature. Then space, vertical bar, and new line is obtained. So such type of data is obtained by clicking that button. For chromium, the similar way we can calculate for compound also, alloy or any metal, but the condition is that either you have to introduce its symbol or atomic mass number. See this new photograph of state-of-art facility. In my research lab, there is a gamma ray spectroscopy system with software, dedicated computer, this digital balance and palette making, because some samples needed to prepare palettes. If it is in liquid, then we can use the container, but it depends on the nature of that sample. If amorphous nature is there, like talcum powder, then it is easy to prepare palette, but crystalline nature, then not possible to prepare the palette. Then we can measure that sample 1 gram and adding that in container uniformly and take the data for mass attenuation coefficient. The career opportunities after MSc, PhD in nuclear physics, the nuclear power plants, food processing, preservation industry, radiation protection, research and development, VIBHA Atomic Research Center, Oil and Natural Gas Corporation, Bharat Heavy Electrical Limited, National Thermal Power Corporation, Indian Space Research Organization, Tax Assistant Exam, Statistical Investigator Exam, and Combined Graduate Level Exam. So summary of this: gamma photon undergoes attenuation
scattering, and absorption processes while they travel in the matter. Radiological data such as linear mass attenuation coefficient, mass energy absorption coefficient, and effective atomic number play crucial role in photon radiation dosimetry. To decide the radiation to be delivered without any harm to normal cell, it is necessary to have a precise knowledge of this gamma attenuation coefficient. As I have already explained that it is having multidisciplinary application. It depends on the sample. If we select the biomolecules, then it is used in medical field. If we can select the soil sample, then by knowing the moisture of that soil, it is used in agriculture field, and for shielding purpose also it is used, and for food preservation. So in this way it is having many applications for measuring the gamma ray attenuation coefficient data. The national and international status of this work, these type of studies on different types of materials are being carried out at VRC Mumbai and several other universities department. Data on scattering and absorption of photons are required for many scientific, engineering and medical applications. The number of materials for which photon cross section are needed is large and ever increasing. In practice, it is necessary to obtain accurate absorption data. The Center for Radiation Research, NBS USA, is continuously engaged in carried out theoretical and experimental work in this field. Other advanced countries like UK, Germany, and France also have several research labs carrying out this type of research work. Okay, thank you. If you have any questions or doubt, please ask. Hello? Any questions? We'll take few questions from the participants. If anyone have any questions, kindly raise your hand. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay. Moving forward, I would like to invite my fellow researcher, Ms. Urvashi Jamukia, to deliver vote of thanks. Am I audible? Yes. Good afternoon to all. On behalf of Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, Vigyan Gurjari, Gujarat Prant Unit of Vigyan Bharati, VIBHA, and GUJCOST, Department of Science and Technology, DST, under Gujarat Vigyan Sammelan, I, Urvashi Jamukia, PhD Research Scholar and Department of Physics, Saurashtra University, Rajkot, thankful to all the participants. I am very much thankful to all our eminent speakers for today, Dr. Pankaj Poddar sir and Dr. Pravina Pawar ma'am, who has delivered very informative talk and spared their valuable time to us. I would like to thank our chief patron, Professor Nitambari Ben Dave ma'am, for encouraging us to carry out such informative series of seminars where hundreds of young minds will avail the knowledge on various aspects of science. I extend my heartfelt thanks to all our patron, Professor Chaitanya Joshi sir, Professor Girish Bhimani sir, Dr. Narottam Sahu sir, and our co-patron, Dr. R.G. Parmar sir, Sri Prasad Kuttun sir, Professor C.K. Kumbharna sir, for their invaluable guidance and support. We are also grateful to the convener of Gujarat Vigyan Sammelan, Professor Nikesh Shah sir, Professor P.N. Joshi sir, Session Chair, Professor Kunal Modi sir, and event coordinator, Professor H.O. Jetwa sir, Dr. Piyush Solanki sir, and all the participants. At last, I thank one and all for being a part of this event. Concluding to this, we are ending the session here. I request all the participants to join 15 minutes prior to the program starts tomorrow. Thank you. Okay. Thank you.